ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಹಾಲು ಜಿಯೋಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ZPL 2015 ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಋತುವಿನ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದು. ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ 4 ಪಂದ್ಯಗಳಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತದನಂತರ ಫೈನಲ್ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿದವರು ಶ್ರೀಯುತ KA ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ನ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಕಬೀರ್ ಶೇಖ್ ಇವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಶ್ರೀಯುತ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ 24x7 ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬಿತ್ತರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದವರು ಶ್ರೀಯುತ ಧೀರಜ್ ಸಂತೋಷ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಶಾಮಿಯಾನ, ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರು ಗುರುದೇವ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ BPL ವಿಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಡಿದಂತ 2 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಮಾಲಕರಿಗೂ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ZPL ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ 4 ತಂಡಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಸುತ್ತಿನ ತೇರ್ಗಡೆಗಾಗಿ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಎನ್ನುವಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯರ್ಥ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಸ್ಪದವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಅದೇ ರೀತಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಸಹಕರಿಸಿ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾಗಾರರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂದೀಪ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So it's up to the last 4 matches, knockout tournaments. The qualifier one is about to begin here between so at last I request umpires, I don't know what is the confusion here, please relax everybody, we are going live, remember. ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿ, ತಮ್ಮ 12 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ನೆನಪಿರಲಿ, ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ಯಾವುದೇ
ಸಂದೇಹಗಳು ಇರಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ತಮ್ಮ ಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ತಮ್ಮ 12ನೇ ಆಟಗಾರರನ್ನು ನೆನಪಿರಿ. I request 12th man of both the teams. Please report to the commentary box. Qualifier 1 is about to begin between Super Kings versus Royal Strikers. The winner of this match will be straightforwardly moving to the second round. Meanwhile, I request the captains of Hungry Wolves and Big Boys, please make your way into the commentary box for the toss. ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಮ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ 5 overs. This is umpires. Is it 5 overs? Yes, it is, says our umpires. Minimum of 4 ballers. Let's see. Beautiful delivery. Yorker length have been attempted. Just a single over of power play, I think. They are coming back for second, running hard. They will complete second run quite efficiently. 2 runs from the first delivery. Clever cricket is needed from both the teams here. Last league match was played between these two teams where Super Kings dominated Royal Strikers. Another one high and handsome. 6 is a goal from the umpire. Easy full toss. It's a gift of a delivery from the hands of the bowler. Have been dispatched through to the mid-wicket region. Exceptional hit. We have seen plenty of sixes through to the mid-wicket region till now. Score sheet reads 8 from the 2 deliveries. Just a single over of power play here. Third delivery on the go. Got the full toss. Now the full toss just behind point. They will go for an easy single. They will be coming back for second run. Exceptional running. 2 more runs have been added. Deepak is the bowler. He is getting punishments from the hands of Rajat, having good time till now. Comes down, goes big again into the mid-wicket region. They will cross shot. Mid-on fielder comes and collects just for a single. Score sheet moves on to 11 on the board, I think. Just 4 deliveries completed. 5th delivery on the go. Karthik is the next new batsman. The non-striker comes strike and rotate the strike through to the point region. Such just a single have been added. After that, 2 sloppy deliveries. He coming back brilliantly in this over. Just a single delivery remains in the power play here. Deepu comes again. Another short delivery. What a tragedy. It should be wide, says umpire. It is wide, says umpire. Poorest of all deliveries. And Super Kings batsmen haven't made effort to latch onto that. Never mind. 1 wide have been signaled. Goes straight. Goes hammerish over the long off from Mighties. 4 runs, says umpire. What a wonderful start from Super Kings. Brilliant start. Score sheet reads 17 on the board after the completion of first power play over. What a wonderful start from Rajat and Karthik here. Lot of discussion going on here. Till matter isn't settled, they are again having lot of discussions. Hope everything goes well till the finals. The situation is such that qualifier, eliminator and qualifier 2, everybody will be losing their cool. Remember the season of monsoon more so. This is doesn't seem to be monsoon season. This is heated atmosphere. So Karthik is in strike. (17) already on the score sheet. Dhanraj is the bowler. I request both the teams, please get on with the game.
ಹಂಗ್ರಿ ವೋಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ರೀಜನ್, ವೈಡ್ ಇಸ್ ದ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಅಂಪೈರ್. One more single. Thanks to those illegality from Dhanraj, missing his run up, and every batsman is questioning our umpires. Remember, they are very strict with their decisions. And in the air, there is a fielder, comes around, drops it. They will go over on a single. They will be coming back for second and quite efficiently. There was a chance, but he was pretty late to react to that chance. Another 2 more runs have been added. Hefty run rate have been maintained. 20 on the board score sheet. Just a single delivery completed, I think. Yeah, just single delivery completed in the second over. Another beautiful delivery and just cut it through to the gully region. One more single. The captain of Royal Strikers doesn't mind these singles until big shots have been eliminated in this score sheet. Remember, first over yielded 17. As of now, 2 deliveries I think completed. 4 runs already from this. So another short delivery have been punished. Nobody covering that field. Again the mid wicket fetching the boundary. 4 more is a go for the umpire. What is going on? Again, the batsmen are doing the umpire's job. It's not right. Let our umpire free themselves, give their decisions. Beautiful delivery and exceptional hit. Straight as a ramrod. Over the umpire said for a mighty 4 runs again. Runs are flowing for Super Kings. The champion, last year champions, showing their class here. 4 more is a goal. Dhanraj is also going 4 runs here. Because of the moisture, they are losing their grip on the pitch, I think. Beautiful shot. Just took the outer edge, I think. They will cross for a single. Meanwhile, Rajat having a wonderful time. Till now, he is the one dominating more so. Karthik is doing a very simple thing, just rotating the strike, giving strike back to Rajat here. Again, this is a very interesting ploy from Super Kings, putting pressure on Dhanraj, making his mind think twice, bowling the deliveries here. He has to be very cool here. Beautiful straight drive, and there is a fielder, short long off fielder, mid off fielder comes and collects the ball just for a single. Royal Strikers has to be very, very clever here, because Super Kings batsmen are just playing with the minds of Royal Strikers. Score sheet creeps on to 31, 20 from the first over. Second over costed 11, I think. Sorry, 17 from the first over. This over costed 14. 21 on the score sheet. 21 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 3 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ. Sorry, 31 on the board. 31. My mistake, not my manual score or online score mistakes. So, Yatish makes his way into the bowling mark here. Both the bowlers gone for plenty. Let's see how Yatish will cope up here. Again, this is not a good ploy, I would say, from Rajat, disturbing the plans of the bowlers here. He has to concentrate on his bowling.
rather disturbing the fielders and the bowlers here. Another one beautiful shot, just guiding the ball to the gully region, getting that easy single. One more single. Sorry, Deepak is completing. Again, confusions, and rightly so. It's a benefit for the fielding team. If it touches that hat, it will cost them 5 runs for sure. Deepu again. Another one, beautiful delivery. But far away from off stump region is a call from the umpire. Extras. Nobody is happy with our umpires. I trust them because they are doing brilliant job from the morning. Deepu again. Goes big, goes high, there is a chance. Fielder waits and settles down and drops it. What a tragedy, what is going on here? Royal Strikers are giving chance out of chances here for Rajat, and he is enjoying. It's a lucky time for Rajat. He has to buy a lottery from Kerala Lotteries here today. Goes for a rear swoop, and they will cross for another one. He gifted his wicket away. Yes, it is. At last they got a wicket. Thankfully for the over rush of blood, I would say, from the non-striker Karthik. He goes back after adding just 6 runs, I think, for his team. It was a brilliant partnership with Rajat there. Deepu again. .36 on the board, just a third over in progress. Sai Darshan is the striker now. Again, beautiful, exceptional, off the back foot, running down, it's a boundary, through to the extra longer third man position, exceptional hit. He had lots of time waiting on the back foot, the shorter delivery and punching it through to the third man region. Brilliant shot that was from the Sai Darshan to start the proceedings for his innings. 40 on the board now. Goes big and there is a fielder. Again. At last he catches it. At last. I hope he has the ball in his hand. Yes, sir, he does. Sai Darshan's innings also comes to an end. They can't take a risk here because they have lots of wickets in their bucket. Roshan makes his way into the middle. Rajat is still there, batting brilliantly. Super Kings, remember, they had just faced a single loss against Bulls, I think. After that, they are dominating till now. Out of 4 matches, they lost a single match thanks to the brilliant bowling performance of Vansh and Adi and Tausif's brilliant innings. Apart from that, these guys were dominating till now from the last season. Let's see. Beautiful, beautiful delivery, good comeback delivery. Roshan has the one simple thing to do, just rotate the strike, give it to strike back to Rajat. Over completed is a call from our scorer. Score sheet is reading at 40 on the score sheet. 40 rungalu. Just 9 runs came from that over, I think. 40 on the board. 3 overs completed. 2 more overs to be bowled here. ನಲವತ್ತು 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 13.5 runs per over is a run rate maintained here.
Next change bowler is Danu. Makes his way into the bowling mark. So Danu. And there is a fielder. Short third man. Short fine leg fielder drops it. Would you believe it? And what is going on here? 2 runs have been gifted thanks to the exceptional running between the wicket. Nothing going right here for Royal Strikers. 2 more runs. Yatish is the bowler, not Danu. Yatish again. Another single. Can't say because these misfields will cost them another run. You can't be assured with the Royal Strikers in this match. They are gifting runs from everywhere. 2 more. Rajat is batting sensibly well thanks to those misfields and drop catches. Again. Misses his line-up. Goes back. Studied himself. Rajat is enjoying these situations and because he is batting well, he is connecting everything from the middle of the bat till now. Rajat again. Easy, but I don't know how he missed the chance there. Might be because of slowness. They are coming back once again. Exceptional running between the wicket from Roshan there. Rajat is struggling, but yet he is not ready to give up his wicket. He is very tired. But he wants to show his class on the qualifier 1 and at last, can't say, let's wait. At last he takes it. Rajat's exceptional innings comes to an end. What a brilliant batting performance from Rajat there. "33 runs came from the bat of Rajat. Exceptional innings. He started with pressurizing bowlers by talking something. I don't know what it was. He played with the mind at the start, then he yielded all the benefits. The mind game worked very well for him, adding 33 out of 14 deliveries. What a brilliant batting exhibition from Rajat. That too in the qualifier. 2 more deliveries remaining in this over. 6 runs already have been gathered. Easy, and he misses a golden opportunity. Bhavish has to come back. Would you believe it? Lollipop delivery. I don't know how Bhavish missed that opportunity. He is coming back. Never mind. Royal Strikers doesn't complain. 1 more delivery bowled and a hat-trick chance for Yatishia. Hat-trick ball is about to be bowled. Yatish is the batsman. Sorry, bowler. Having a hat-trick chance and Fayaz is the batsman facing the music. Let's see. Hat-trick ball to the newest batsman. And dot delivery. Dot delivery. Over completes. Very eventful over. 2 wickets and 6 runs from that over. Sorry, 8 runs, 2 wickets and 6 runs. 46 on the board. 46. 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. Last 2 overs produced just 15, I think. It's a good comeback. Let's see what happens in the last over. Interesting choice has to be made. Who is given the ball? Nelson. I doubt. Let's see who will be the next change bowler. They have 2 bowlers in their tank. Whom they choose, it's very interesting. At last, they went with interesting choice. Mohit is given the choice here. 46 on the score sheet. Remember, last 2 overs, just 15 runs came. Before that, 31 from 3.
30 from 2, I think. After that, slight bit of break. More importantly, wicket of Rajat also have been grabbed. 46 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ run rate is dipping down. It was at the start 15 runs per over. Far away from all stump region. 1 run have been added. Shuffle in the crease will make decisions harder for you. So first runs from this over. Interesting bowling action. Remember, it will be hurting you if you come in the view of the umpire. You can't argue later. Beautiful, exceptional. There is a fielder, but he chooses to stay back and wait for the ball to come to him. Exceptional thinking, I would say, from that fielder. One more single. Score jumps up to 48 on the board. On the board. Just a single delivery completed. Last 5 deliveries of this innings is about to be bowled here by the bowler. Very good delivery, exceptional bowling. The off swing is creating magic here. 2 very good deliveries. Apart from that, one wide. He is coming back brilliantly. Third delivery on the go. Another short delivery, and it's have been collected. It's collected beautifully, but unfortunately it stays inside the ground. What is going on? Royal Strikers gifting lot of runs here. What a tragedy. I feel pity for the fielders and the captain. Everybody is leaking runs thanks to their misfields. It was a brilliant effort, I would say, from that extra square leg fielder to cover that space and get the ball into the hands of the keeper. Unfortunately, keeper lofts it away. This time he connects it brilliantly. There is a fielder, tries his level best. Exceptional attempt. They will come back for second run. You have to admire the fielding efforts of that fielder. 2 more runs have been added. With the 2 runs, score sheet moves on to 52 on the board. 52. 4 ಎಸ್ಸೆಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 2 more deliveries in this innings remains. Goes high, there is a fielder, settles down, hope he will catch it. Yes, he can. He catches, and wicket tumbles. One more wicket falls. Score sheet reads 52. 1 more delivery remaining. It has been exceptional comeback after the power play overs. 31 from first 2. After that, just 21 came from 2.5 deliveries. Let's see what happens in the last delivery. In that 2.5 deliveries, there were plenty of drop catches and fielding lapses. Gifted lot of run there. Royal Strikers will look into those missed fields in their chases. Let's see. Beautiful, exceptional, and there is easy at last. Wicket tumbles. 52 is on the board. 53 will be the target. This is getting very interesting. 53 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಜಯಗಳಿಸಲು ಕ್ವಾಲಿಫೈ. On the score sheet, last over yielded 6 runs, I think. 7 runs from the last over, I think. It was a brilliant comeback from Royal Strikers. Thanks to that, last 3 overs yielded
is over to Prashant now for sweet and wonderful language of Kannada. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂದೀಪ್ ಮಂಗಳೂರವರೇ. ಅಂಕಣದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನದ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸುತ್ತಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಸೆಷನ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ 52 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುವಂತಹ ಜಿಎಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ 53ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಈ ಬಾರಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಫೈನಲ್ನ ನೇರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ 24x7 ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೆರಳಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ ಜೈ ಗುರುದೇವ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಇದರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಟಗಾರರು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಉದ್ದರಿಗಳು ಪತನವಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಚೆಂಡೆಯ ವಾದನದ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವವರು ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಚೆಂಡೆ ಬಳಗ ಕೊಂಚಾಳಿ ಇಲ್ಲಿನ ತಂಡ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಘಟಕರ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪರಿಮಿತ ಓವರ್ಗಳ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮೊದಲ ಉಪಾಂತ್ಯ ಪಂದ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಷನ್ ಆರಂಭವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಯಿ ದರ್ಶನ್ ಅಂಕಣದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇತರ ಮಧ್ಯೆ ಟಾಪೇಜ್ ಆಗಿ ಆಗಿರಕಟ್ಟ ಚೆಂಡು ಇತರ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಟ್ ಬಿಹಾಣಿ ಬಾರಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಮೊದಲ ಉತ್ತರಿ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ನ ಸ್ವರೂಪಿ ಬಾರಿ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಮರಳಿದ್ರು. ನಿಗದಿತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಹಾಕುವಂತ ತಂಡ ಈ ಬಾರಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಗರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವರೂಪ್ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸದೆ ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಮರಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಜಾಗವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಹೊಡಿಬಡಿಯ ದಾಂಡಿಗ ದೀಪಕ್ ಅಂಕಣದೊಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಗಾಗಿ ಹಂಗ್ರಿ ವೂಲ್ಫ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಬನ್ನಿ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಬನ್ನಿ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಕಣದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಉದ್ದರೆ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದೀಪಕ್ ಕೂಡ ಶೂನ್ಯ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಅತಿಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಆಟಗಾರರು ಈ ರೀತಿಯ ನೀರಸ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಮರಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಆಟಗಾರರ ಬಹಳಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಯದ ಲಯವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾದಂತಹ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಈ ಬಾರಿ ಎದುರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಅಂಕಣದೊಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಉದ್ದರಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ಟೂರ್ನಿಯ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ದಾಖಲೆ ಈವರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸಾಯಿ ದರ್ಶನ್ಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದಿನದ ಮೊದಲ ಉಪಾಂತ್ಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಬಾರಿಗಾಗಿ. ಈ ಬಾರಿ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಾಂಡಿನ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಂತ ಚೆಂಡು ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟದಲ್ಲಿ 2 ಉದ್ದರಿಗಳ ಪತನದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಅದೃಷ್ಟದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಈ ಬಾರಿ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಜೊತೆ ಆಟದಲ್ಲಿ. ಒಂದೆಡೆ ಧನು ಪರಿಚಯ ಕಂಡ್ರೆ ಅವರ ಜೊತೆಗಾಗಿ ಯತೀಶ್ ಈ ಬಾರಿ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 5ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 53ರ ದೂರದ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗೆ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯತೀಶ್ ದಾಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಮತ್ತೆ ಸಾಯಿ ದರ್ಶನ್. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ 5ನೇ ಬಾರಿಗಾಗಿ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ಕಾಣುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಆಗಿ ಎಸೆದ್ರು ಕೂಡ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಲೈನ್ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನುಸಿಳಿದಂತ ಚೆಂಡು. ಯಾವುದೇ ಅತಿರಿಕ್ತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಡ ಮೊತ್ತ ಕೇವಲ 5ರಲ್ಲೇ ಸ್ಥಗಿತತೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ 2 ಉದ್ದರಿಗಳ ಪತನದ ನಂತರ ಜಯ ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರವಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಸಮೀಪಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಕಾಟ್ ಬಿಹಾಣಿ ಬಾರಿ 3ನೇ ಉದ್ದರಿ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ. ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಆಟಗಾರ ಈ ರೀತಿಯ ನೀರಸ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಈ ಬಾರಿ ಎದುರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಎಡವಿಕೆ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ತದನಂತರ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಪಂದ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಡವಿಕೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಗೆದ್ದರೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ. ತಲೆ ಕೆಳಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ರೌಂಡ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಹಂಗ್ರಿ ವೂಲ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ್ರು ಬನ್ನಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಒಂದು ಅದೃಶ್ಯದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಗೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ಕಾಣುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧನು ಭರ್ಜರಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾರಿ 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ ತಡ ಮೊತ್ತ 11ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಭವಿಷ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಂಗ್ರಿ ವೂಲ್ಫ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯ ಬಾರಿ ಬವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ಕಾಣುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಧನು ಒಂದು ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯೂ ಕೂಡ ತಡ ಮೊತ್ತ 12ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 41 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಲಾಭದ ಅಂಶಗಳು ಉಭಯ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಕೂಡ. ಓವರ್ನ 3ನೇ ಚೆಂಡು. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು. ಗೂಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದಾಂಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಂತ ಚೆಂಡು ನೆಗೆತದ ಭೂಸ್ಪರ್ಶವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೆಟ್ಟ ನೇರ ಹೊಡೆತ ಎಸೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಎಸೆಗಾರ ಈ ಬಾರಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಭವಿಷ್ಯ ಬಾರಿ ಓವರ್ನ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ನ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಭವಿಷ್ಯ ಬಾರಿ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ಕಾಣುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಮೋಹಿತ್ ರಾಜ್ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ ತಡ ಮೊತ್ತ 13ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ 52 ಓಟಗಳ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ 53ರ ಗುರಿಯನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾದಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ದೇಹದಾಢ್ಯ ಪಟುಗಳು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದಂತ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ದೇಹದಾಢ್ಯ ಪಟುಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ ಜೊತೆ ಕೂಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದಂತ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು ಬಹುಶಃ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸರ್ವಾಧಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ನೆಗೆತದ ಹೊಡೆತವನ್ನ ಕಂಡಿರಕಂತ ಚೆಂಡು ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಭೂಮಿಯನ್ನ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿರುವ ಚೆಂಡು ಕೇವಲ 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ 12 ಚೆಂಡು ತಡ ಮೊತ್ತ 14ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನುಳಿದ 18 ಚೆಂಡು 39 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಂಗ್ರಿ ವೂಲ್ಫ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಸಾಯಿ ದರ್ಶನ್ ಈ ಬಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಈತನ್ ಮಧ್ಯೆ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ಕಾಣುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಎಸೆಗಳು ಸಾಯಿ ದರ್ಶನ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕನಸಿಗೆ ವಿಘ್ನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಾರಿ. ಓವರ್ನ ಮೂರನೇ ಚೆಂಡು ಈತನ್ ಮಧ್ಯೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಲ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡು ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಡೆತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈತನ್ ಮಧ್ಯೆ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಅವಳಿ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಧನುಗೆ ಸಂತ ಚೆಂಡು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಓಟವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಓಟಗಳಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಚಾಲನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 17ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಸೆಷನ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ 14 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ಕಾಣುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ಣ ಹಂತವಾಗಿ ದಾಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರಕಂತ ಚೆಂಡು ತನ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೊಗಸೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಮೋಹಿತ್ ರಾಜ್ ಉತ್ತರಿ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಾರಿ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ವಾಧಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಸಾಯಿ ದರ್ಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ 3 ಉದ್ದರಿಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ಎಸೆಗಾರನಾಗಿ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಾರಿ ಔಟ್ ಆದ ಆಟಗಾರರ ಜಾಗವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಜೊತೆ ಆಟಕ್ಕಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಅಂಕಣದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಾಯಿ ದರ್ಶನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಆರ್ಕರ್ಲೆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೂಡ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಹತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ 18 ಚೆಂಡು ತಣ ಮೊತ್ತ 18ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 12 ಚೆಂಡು 35 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಔಟ್ ಆದ ಆಟಗಾರನ ಜಾಗವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂಕಣದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರರ ಪರಿಚಯ ನಮಗಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ದಯವಿಟ್ಟು ತಂಡದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಟಗಾರರು ಮೀಸಲು ಆಟಗಾರರು ಸಹಕರಿಸಿ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಉಡುಪುನ ಶ್ರವಣ ಅಂಕಣದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸಗಾರರ ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ನಮಗಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಬಾರಿ. ಬೌಲರ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಶಫೀಕ್ ಬೌಲರ್ ನೇಮ್ ಸ್ವಯಂ ಈ ಬಾರಿ ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೆಫ್ಟಿ ರೈಟಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂಕಣದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತು ಕಂಡಿರಕ್ಕಂತ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾರುಪತ್ಯವನ್ನ ಮೆರೆದಿರಕ್ಕಂತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರಕ್ಕಂತ ರೈನಾ ಧೋನಿ ಜೋಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಧೋನಿ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಜೋಡಿ ಇರಂತ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಜೊತೆ ಆಟ ಲೆಫ್ಟಿ ರೈಟಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈ ಬಾರಿ ಅಂಕಣದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಓಟುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾಣಕ್ಕೆತ್ತರದ ನೆಗೆತದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಮನ್ನಣೆಯ ತೂಕದ ಹೊಡೆತಗಳು ಈ ಬಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಯಂ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಬಹುತೇಕ ಜಯವನ್ನ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸ ಈ ಋತುವಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಮುಖವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ. ಮೂರನೇ ಚೆಂಡು, ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಚೆಂಡು ದಾಂಡಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಡ ಮೊತ್ತ ಸ್ಥಗಿತತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಸ್ದಲ್ಲಿ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ 4ನೇ ಬಾರಿಗಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಅತಿರಿಕ್ತಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಿದ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಎಸೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಸೆಗಾರ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವಯಂ. ಓವರ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡು, ಮತ್ತೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಎಡಗೈ ದಾಂಡು. ಈ ರೀತಿಯ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಜಯದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಈ ಬಾರಿ ಜಯದ ಸಮೀಪಕ್ಕೂ ಬರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೊರತಾಗಿ ಅತಿರಿಕ್ತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ತ್ವರಿತ ಗತಿಯ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ವಿಳಂಬ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು, ಈ ಬಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಂಡಿರಕ್ಕಂತ ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 3 ಉದ್ದರಿಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 21 ಓಟಗಳು. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನುಳಿದ 6 ಚೆಂಡು 32 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ ಜೊತೆಗಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅವಳಿ ಓಟುಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಲೆ ಕೆಳಗಾದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು ನೇರ ಫೈನಲ್ಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪರಾಜಿತ ತಂಡ ಆಡಬೇಕಾದಂತ ಅವಕಾಶಗಳು. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 32 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನ ನೇರ ದರ್ಶನದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ 24x7 ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪರದೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಣ್ಣುಗಳು ಇವತ್ತಿನ ZPL ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಳಿನ ದಿನ ಕೂಡ ಇದೇ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಚುಟುಕು ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಕೂಡ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನ ಎಸೆಗಾರರ ಪರಿಚಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಡೆ ಕಾಂಡಲೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಬಂದು ಮುಗಿಪ್ಲಣ್ಣ
ಶಫೀಕ್ ಈ ಬಾರಿ ಅಂಕಣದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ. ಸಮಯ ಇದೆ ಎಂದು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆಟಗಾರರಿಗೆ. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಗಡಿಭಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಮಧ್ಯೆ ನಿಯಮದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ಅಕ್ರಮ ಎಸೆದ ತೀರ್ಪು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೀಟ್ನ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕ್ರಮ ಎಸೆತ ತಿರುವನ್ನು ಬದಲಿಸಬಹುದು. ತನ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನೆಗೆತದ ಹೊಡೆತ, ನೆಟ್ಟ ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಮಧ್ಯೆ 6 ಓಟಗಳು. ತಡ ಮೊತ್ತ 28ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 25 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ಕಾಣುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೌಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೈವ್ ರೂಪದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಿ. ಬಾರಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಹತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಡ ಮೊತ್ತ 28 ಓಟಗಳು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜಿಗಿತದ ಚೆಂಡು, ಸುಂದರತೆ ರೈಸಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೂಡ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 25 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಸಿಡಿಲ ಬಲದ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನೇರ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಬಾರಿ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ಗೆ. ಸಿಕ್ಸ್ಗೆ 6 ತೃತೀಯ ನೇತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದಂತ ತೀರ್ಪಿದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ತೃತೀಯ ನೇತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದಂತ ತೀರ್ಪಿದು. ತನ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲ ಬರದ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಜಯವನ್ನ ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಧನು ಈ ಬಾರಿ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 13 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಗಳು ಅತಿರಿಕ್ತಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 13 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಫೀಕ್ ಈ ಬಾರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಖರ ಫಲಿತಾಂಶದ ಜಯದೊಂದಿಗೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಜಿಯೋ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ. ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯತ್ತ ತೇರ್ಗಡೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಕೆಎ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ನ ಮಾಲಕರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಕಬೀರ್ ಶೇಖ್ ಅವರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಸಹೃದಯಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕರನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಜಿಎಸ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ವರ್ಗವಾಗಿ ತಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವರ್ಣ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂತೋಷ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಾಯಿ ದರ್ಶನ್ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಯಿ ದರ್ಶನ್ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ
ಆಯೋಜಕ ಮಿತ್ರರು ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡು ವಿತರಿಸಿ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. संतोष संतोष मुझे एक्स्ट्रा बॉल बात होना रहा. शुक्रिया प्रशांत. मैं संतोष आप सभी दर्शकों को फिर से एक बार स्वागत करता हूं इस ZPL 2025 की चौथी ऋतु पर. और इस एलिमिनेटर मैच के टॉस जीत चुके हैं बिग बॉयज के कप्तान. टॉस जीतकर कप्तान ने पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला लिया है. और इस मैच का 2 ऑफिशियल अंपायर्स है, मिस्टर संतोष और मिस्टर धीरज. और चलिए देखते हैं एक करो या मरो की स्थिति पर है इस प्रतियोगिता की ये दोनों टीमें. इनके लिए एलिमिनेटर मैच अब कुछ ही क्षण में शुरू होने वाला है. हालांकि टॉस जीतकर कप्तान बिग बॉयज के पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया है. 5 ओवर का इस इनिंग्स में 1 ओवर पावर प्ले होगी और मिनिमम 4 गेंदबाज को गेंदबाजी करनी होगी. और आरंभिक सलामी बल्लेबाजों के रूप में मैदान पर उतर चुके हैं दो सलामी बल्लेबाज ज़िल्स हंग्री वोल्स की तरफ से राहुल और हर्षित. 2 सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतर चुके हैं. स्ट्राइकर एंड पर हैं राहुल और नॉन स्ट्राइकर एंड पर जा चुके हैं बल्लेबाज हर्षित. और चलिए देखते हैं पहला ओवर लेकर बिग बॉयज की तरफ से कप्तान किसको लाते हैं गेंदबाजी करने के लिए. और पहला ओवर लेकर सुबित नए गेंदबाज पहला ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे. बल्लेबाज राहुल की तरफ. राहुल जिन्होंने काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की थी पिछले कुछ मैचों में. सिलसिला उनको जारी रखना होगा, नहीं तो ये एलिमिनेटर मैच है. यदि हाथ से मैच फिसली तो मौका भी इस प्रतियोगिता का हाथ से फिसल सकता है. तो सुबित तैयार पहला गेंद लेकर मेन रोड एंड से बल्लेबाज राहुल के लिए. और इस भी शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी, उछाल कर मारने की कोशिश की थी, ठीक तरह से बल्ले पर नहीं आई गेंद राहुल की. कोई रन की बढ़ोतरी अब तक स्कोरबोर्ड में नहीं हुई. पहली गेंद थोड़ी बहुत शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी. बल्लेबाज हल्के से अपने कदमों को पीछे की तरफ खींचते हुए उछाल के मारने की कोशिश की थी और नाकामयाब हुए. इस बार टिप्पक आने के बाद और एक उछाल लेती हुई गेंद. बल्लेबाजी इस बार भी फुल खेलने की कोशिश की थी और इसी बीचों बीच 1 रन दौड़ चुके हैं. पैड से लग के गई थी गेंद और एक अतिरिक्त रन की जुड़ चुके हैं. स्कोरबोर्ड पर 1 ही रन से शुरुआत कर चुके हैं. इसी बीच सुबित अपना अगला गेंद लेकर तैयार. फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए हर्षित स्ट्राइकर एंड पर. इस बार बैकफुट पर जाकर स्टीयर किया है. वहां पर शॉर्ट थर्ड मैन जरूर मौजूद थे.
ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ರಜತ್ ಇವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೇನ್ ಸ್ಟೇಜಿನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ऐसे बीच बल्लेबाज राहुल ने उछाल दी है 6 रनों के लिए. कुल मिलाकर 8 रन स्कोरबोर्ड पर जमा हो चुके हैं. इसी बीच गेंदबाज तैयार. इस बार टिप्पा खाने के बाद थोड़ी बहुत उछाल लेती हुई ये गेंद खास कुछ कर नहीं पाए. हालांकि एक फुल स्विंग जरूर दे बैठे हैं वहां पर बल्लेबाज राहुल. इस बार सीधे विकेट कीपर के दस्तानों पर. और इस बार ऑन साइड से टर्न होती हुई ये गेंद वाइड का इशारा अंपायर से एक अतिरिक्त रन की मदद से स्कोरबोर्ड पर 9 रन जमा हो चुके हैं. 9 ऑन द बोर्ड. और सुबीत फिर से एक बार तैयार बल्लेबाज राहुल के लिए गेंदबाजी करने के लिए. और राहुल स्ट्राइकर एंड पर इंतजार कर रहे हैं सुबीत की. इस बीच बहुत ही अच्छी गेंदबाजी प्रदर्शन. इस बार भी थोड़ी बहुत उछाल लेती हुई गेंद कुछ हद तक नाकामयाब हुए. लगातार बल्लेबाज राहुल जैसे कि आखिरी गेंद उछाल लेती हुई गेंद हम दर्शक देखें. ओवर की समाप्त हो चुके हैं. पहला ओवर समाप्त होने के बाद स्कोरबोर्ड पर स्कोर है 8 रन 8 ऑन द बोर्ड. सॉरी 9 रन स्कोरबोर्ड पर जमा हो चुके हैं. 9 ऑन द बोर्ड. और नए गेंदबाज चरण आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए. कॉलेज एंड से गेंदबाजी करेंगे. बल्लेबाज इस बार स्ट्राइकर एंड पर हर्षित मौजूद. तो थोड़ी बहुत फील्डिंग की तब्दीली करते हुए बल्लेबाज हर्षित के लिए चरण अपने कप्तान के साथ. चलिए देखते हैं कौन सी रणनीति अपनाते हैं बल्लेबाज हर्षित पर गेंदबाज चरण. अपना पहला गेंद लेकर तैयार. इस बार ऑन साइड से टर्न होती हुई गेंद हालांकि फ्लिक करना चाहा जरूर. लेग स्टंप से बाहर जाती हुई ये गेंद वाइड का इशारा अंपायर से. एक अतिरिक्त रन की मदद से कुल मिलाकर 10 रन स्कोरबोर्ड पर जमा हो चुके हैं. 2 रनों की आंकड़ा यहां पर स्कोरबोर्ड पर जमा होते ही अगला गेंद इस बार उछाल दिया है लगभग डीप मिड विकेट के. और वहां पर क्षेत्र रक्षक मौजूद थे और इन्होंने कोई गलती नहीं की. बेहतरीन कैच लेते हुए बल्लेबाज हर्षित की इनिंग्स पर पर्दा गिरा दी है इन्होंने. हालांकि पूरी कोशिश की थी बल्लेबाज हर्षित ने इसको सीमा रेखा के बाहर भेजने की, लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाए. और जगह इनकी इन्होंने खेला था वो बिल्कुल गलत था. वहां पर क्षेत्र रक्षक मौजूद थे. इन्होंने कोई गलती नहीं किए और एक विकेट गिर चुका है. हर्षित के रूप में इनका स्थान भरने के लिए नए बल्लेबाज मैदान पर उतर चुके हैं. 10 नंबर की जर्सी पर हार्दिक. और चलिए हार्दिक और राहुल मिलकर कितने रन बटोर लेते हैं इस 5 ओवर की इनिंग्स पर इस एलिमिनेटर मैच पे. और चरण अपना अगला गेंद लेकर तैयार गेंदबाजी करने के लिए. और इस बार ड्राइव किया है. बेहतरीन ड्राइव वहां पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा पर जब तक आकर फील्डर फील्ड करे. बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं और अंपायर ने उंगली उठा दी है. इस तरह एक बेहतरीन बल्लेबाज रनआउट के रूप में वापस डगआउट पर लौट रहे हैं. हालांकि कोशिश तो जरूर अच्छी थी लेकिन थोड़ी बहुत कम पड़ गई इनकी दौड़. और जैसे ही गेंदबाज विकेटों को उखाड़े बल्लेबाज क्रीज पर ठीक तरह से पहुंच नहीं पाए, जिसकी वजह से बल्लेबाज राहुल का विकेट गिर चुका है. और नए बल्लेबाज साध का आगमन हो चुका है. एक अच्छे बल्लेबाज अच्छे स्ट्राइकर है क्रिकेट
टेनिस बॉल क्रिकेट की, और इनको अब हार्दिक के साथ मिलकर इस इनिंग्स को संभालना होगा। चरण अपना अगला गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार, इस बार स्ट्राइकर एंड पर खड़े हैं बल्लेबाज। इस बार हल्के से मोड़ देना चाहते थे, बल्ले पर ठीक तरह से नहीं आई, थोड़ी बहुत बैकफुट पर जाकर मोड़ देना चाहते थे, लेकिन गुड लेंथ पर पड़ी थी गेंद और पड़ने के बाद थोड़ी बहुत उछाल ली, जिसकी वजह से बल्लेबाज की जो फ्लिक करने की कोशिश थी वो नाकामयाब हुई और रन भी नहीं बनी। और इसी बीचों बीच अगला गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। इस बार ट्राई क्या है, एक्स्ट्रा कवर की दिशा पर गेंद जा चुके, एक रन बन चुके, दूसरा लेंगे तो खतरा हो सकता है। पिछली गेंद पर राहुल का विकेट गिर चुका था इसी कोशिश में, और इस बार कोई जोखिम उठाना नहीं चाहा, पर बल्लेबाजों ने सिर्फ एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ा। इस एक रन की मदद से कुल मिलाकर स्कोरबोर्ड पर स्कोर है 12 रन, 12 ऑन द बोर्ड। ऐसे बीच अच्छी गेंद थोड़ी बहुत नीची रही, टिप्पा खाने के बाद जिस उछाल की बल्लेबाज इंतजार कर रहे थे वो उछाल उनको नहीं मिली, और काफी रफ्तार के साथ टिप्पा खाने के बाद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों पर। और इसे बीच चरण अपना अगला गेंद लेकर इस बार ट्राई करना चाहा, बल्ले पर तो जरूर आई लेकिन ज्यादा दूर नहीं गई, रन लेंगे तो खतरा हो सकता है। ओवर की समाप्त होते ही 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 2 ओवर समाप्त होने के बाद स्कोरबोर्ड पर स्कोर है 12 रन, 12 ऑन द बोर्ड। 6 रन की औसत से ये एलिमिनेटर मैच बल्लेबाजी की पारी पर आगे बढ़ती हुई बल्लेबाज राहुल और हर्षित आउट हो चुके हैं। इस वक्त साद और बल्लेबाज हार्दिक हंग्री वॉल्स की इनिंग्स संभालते हुए, और नए गेंदबाज नितिन, नए गेंदबाज तीसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। मेन रोड एंड से बल्लेबाज हार्दिक स्ट्राइकर एंड पर। हार्दिक के लिए थोड़ी बहुत फील्डिंग की तब्दीली हो चुकी है, और जहां तक हम देखें तो काफी हद तक आक्रमणकारी फील्डिंग की सजावट कर चुके हैं कप्तान हार्दिक और साद के लिए। हार्दिक इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर है। नितिन अपना पहला गेंद लेकर इस बार स्टेप आउट करके उछाल कर मारने की कोशिश में नाकामयाब हुए वहां पर हार्दिक। टिप्पा खाने के बाद इस बार भी गेंद नीची रही, विकेट कीपर के दस्तानों पर गई। हालांकि कुछ हद तक आगे बढ़ चुके थे लेकिन कोई खतरा नहीं बल्लेबाज को, रन भी नहीं बनी। 12 रन पर टिकी हुई है नितिन। अपना दूसरा गेंद लेकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार बल्लेबाज हार्दिक के लिए। इस बार भी फुल स्विंग देना चाहा, इस बार भी गेंद नीची रही, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों पर। इस अजीब उछाल की जो नीचे रहते हैं जो गेंदें, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत महसूस हो रही है वहां पर बल्लेबाज हार्दिक को स्ट्रोक के लेके। चलिए देखते हैं, तीसरा गेंद लेकर नितिन तैयार हार्दिक के लिए। इस बार परिवर्तन के तौर पर धीमी गति की गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा लिया होगा और अंपायर ने इसे आउट करार देते ही वापस डगआउट पर लौट रहे हैं। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन वहां पर नितिन द्वारा। हालांकि पहले 2 ओवर गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज भी काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, और इसी गेंदबाजी का सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए नितिन भी लगातार 2 गेंद टॉस करने के बाद तीसरी गेंद पर हार्दिक का विकेट चट खाने में कामयाब हो चुके हैं, और इनका स्थान भरने के लिए नए बल्लेबाज शिव प्रसाद नए बल्लेबाज मैदान पर उतर चुके। एक आशा की किरण और भी बच्ची हैं हंग्री वॉल्स के शिव प्रसाद के रूप में। चलिए देखते हैं शिव प्रसाद और साद मिलकर क्या कुछ कर पाते हैं इस विकेट पर।
और इस बार चौथी गेंद को तिरछे बल्ले से निकाल दिया। वहां पर क्षेत्र रक्षक ने काफी समझदारी के साथ पैरों के जरिए से रोक दिया था, जिसकी वजह से बल्लेबाजों को सिर्फ एक ही रन से संतुष्ट करना पड़े। इस एक रन की मदद से 13 रन स्कोरबोर्ड पर जमा हो चुके हैं। काफी देर के बाद एक रन और स्कोरबोर्ड पर जुड़ते ही 13 रन स्कोरबोर्ड पर जमा हो चुके हैं और नितिन अपना 5वां गेंद लेकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो चुके हैं। स्ट्राइक करंट पर आ चुके हैं साद। इसी बीच नितिन अपना 5वां गेंद लेकर तैयार और इस बार ड्राइव किया है। गेंद गई है कुछ हद तक लॉन्ग ऑफ की दिशा पर फील्ड होते हुए बल्लेबाजों को एक ही रन लेने का मौका। बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन, गेंदबाजी के साथ साथ क्षेत्र रक्षक भी काफी चुस्तीले नजर आ रहे हैं और सिर्फ एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ा बल्लेबाजों को। 14 रन स्कोरबोर्ड पर जमा हो चुके हैं। 14 ऑन द बोर्ड। आखिरी गेंद लेकर नितिन तैयार। इस बार तिरछे बल्ले से खेलने की कोशिश, ठीक तरह से टाइमिंग नहीं दे पाए, लेकिन एक रन बन चुके, दूसरे रन के दौड़ रहे हैं और यहां पर रनआउट की खतरा। जी हां, स्क्वायर लेग अंपायर मिस्टर संतोष ने अपनी उंगली उठा दी है और जैसे उंगली उठे बल्लेबाज शिव प्रसाद के इनिंग्स पर पर्दा गिर चुके हैं और एक आत्मविश्वास के साथ बिग बॉयज की पारी क्षेत्र रक्षण में और गेंदबाजी में कुछ हद तक चमकती नजर आ रहे हैं। इस फ्लड लाइट की रोशनी के अंदर मैदान के बीचों बीच सिर्फ 15 रन स्कोरबोर्ड पर जमा हो चुके हैं अब तक और इनिंग्स की चौथा ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं गेंदबाज चरण। अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे और अश्वत नए बल्लेबाज जुड़ते हुए साध के साथ और 2 ओवर का इनिंग्स में 2 ओवर और भी बची हैं। 15 रन स्कोरबोर्ड पर जमा हो चुके हैं। कुछ हद तक यदि 35 रनों का आंकड़ा पार कर लेते हैं तो काफी अच्छी स्कोर कह सकते हैं। नपी तुली गेंदबाजी करें तो बात बन सकती है। ऐसे बीच अच्छी गेंद, बल्लेबाज उछाल के मारने की कोशिश की थी, बल्ले पर ठीक तरह से नहीं आई, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाए। इस एक रन की मदद से 16 रन स्कोरबोर्ड पर जमा हो चुके, 16 ऑन द बोर्ड और चरण अपने दूसरे ओवर का दूसरा गेंद लेकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अश्वत स्ट्राइक करंट पर। इस बार अश्वत फुल स्विंग देना चाहते थे लेकिन बल्ले पर नहीं आई गेंद। टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ स्विंग हुई थी। वाइड का इशारा अंपायर से मिल चुके हैं। एक अतिरिक्त रन की मदद से 17 रन स्कोरबोर्ड पर जमा होते ही वापस गेंदबाजी पर तैयार। इस बार अच्छे गेंद बोल्ड आउट हो चुके हैं। हालांकि थोड़ी बहुत अपने कदमों को पीछे की ओर खींचते हुए पुल करना चाहा, लेकिन गेंद की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि इनके ऑफ स्टंप उड़ चुके हैं। अश्वत बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। चरण को और एक सफलता प्राप्त हो चुकी है और इनका स्थान भरने के लिए नए बल्लेबाज कीर्तिराज मैदान पर उतर चुके हैं। अब कीर्तिराज को अपने नाम के हिसाब से कुछ बेहतरीन बल्लेबाजी करने की सख्त जरूरत है और बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला जारी है बिग बॉयज की मैदान के बीचों बीच। इस वक्त चरण अपने अदाकारी निभाते हुए और नए बल्लेबाज कीर्तिराज अपना बल्लाथा में मैदान पर उतर चुके हैं। कुछ खतरनाक, कुछ आक्रमणकारी बल्लेबाजी करने की सख्त जरूरत है इनको। चरण अपना अगला गेंद लेकर इस बार फ्लिक करना चाहते थे, ठीक तरह से बल्ले पर नहीं आई गेंद। रन के लिए दौड़ना चाहते थे लेकिन नॉन स्ट्राइक करंट से साध ने मना किया है, जिसकी वजह से कोई रन नहीं बनी है। अब स्कोरबोर्ड अभी भी 17 रन पर टिकी हुई है। ऐसे बीच अगला गेंद और इस बार भी क्या है, गेंद गई है लगभग लॉन्ग ऑन की दिशा पर। जब तक फील्डर फील्ड करे बल्लेबाज दौड़कर 1 रन पूरा कर चुके। इस 1 रन की मदद से
18 रन स्कोर बोर्ड पर जमा हो चुके, 18 ऑन द बोर्ड। और चरण अपना अगला गेंद लेकर इस बार ड्राई किया है, यहाँ पर क्षेत्र रक्षक मौजूद, 1 रन बन चुकी है, दूसरा रन लेंगे तो खतरा हो सकता है। काफी चुस्तीले क्षेत्र रक्षण के प्रदर्शन देते हुए बेहतरीन गेंदबाजी के साथ बिग बॉयज की टीम इस एलिमिनेटर मैच पर अपना आखिरी गेंद लेकर चरण तैयार। और इस बार कीर्तिराज ऑन साइड से टर्न होते हुए गेंद को काफी संभाल कर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बाहर की तरफ जा रही थी और वाइड का इशारा मिलते ही 19 रन स्कोर बोर्ड पर जमा हो चुके हैं, 19 ऑन द बोर्ड। और चरण अपना आखिरी गेंद लेकर फिर से एक बार, इस बार उछाल कर मारने की कोशिश, ठिप्पा खाने के बाद नीचे रही गेंद। ओवर की समाप्ति यानी 4 ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर बोर्ड पर 19 रन ही जमा हो चुके हैं। अब सिर्फ 1 ओवर का खेल बाकी है। ओके सॉरी, 20 रन जमा हो चुके हैं, अब 1 ओवर का खेल बाकी है। कम से कम 15 या 16 रन बटोर लेते हैं तो एक सम्मानपूर्वक स्कोर बिग बॉयज के सामने रख सकते हैं। चलिए देखते हैं इस 6 गेंदों में कितना रन बटोर लेते हैं बल्लेबाज साद और कीर्तिराज मिलकर। तो आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज बॉलर प्रमिक नए गेंदबाज आखिरी ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइकर एंड पर है साद, नॉन स्ट्राइकर एंड पर कीर्तिराज खड़े हैं। थोड़ी बहुत साद के लिए फील्डिंग की सजावट हो चुकी है प्रमिक से अपना पहला गेंद लेकर। इस बार ठिप्पा खाने के बाद थोड़ी बहुत उछाल लेती हुई ये गेंद 1 बाउंस के इशारा होते ही अब प्रमिक अपना दूसरी गेंद पर तुले हैं और स्ट्राइकर एंड पर इंतजार करते हुए साद प्रमिक की दूसरी गेंद की। इस बार नो बॉल का इशारा अंपायर से और इस नो बॉल के जरिए 1 रन स्कोरबोर्ड पर जुड़ चुके हैं और साद के लिए एक मौका है फ्री हिट खेलने के। और चलिए देखते हैं, इस बार ऑन साइड से टर्न होती हुई ये गेंद वाइड का इशारा, रन्स धीरे धीरे स्कोरबोर्ड में जमा होते हुए फ्री हिट अभी भी जारी है, मौका अभी भी बाकी है बल्लेबाज साद के लिए। इस बार उछाल के मारने की कोशिश जरूर की है, वहां पर गेंद गई है एक्स्ट्रा कवर की दिशा पर। जब तक फील्डर फील्ड करे बल्लेबाजों को मौका है 1 रन प्राप्त करने की। इस 1 रन की मदद से कुल मिलाकर स्कोरबोर्ड पर स्कोर जमा हो चुके हैं 23 ऑन द बोर्ड। 23 रन जमा हो चुके हैं। कीर्तिराज स्ट्राइकर एंड पर आ चुके हैं। इस बार उछाल दी है, ज्यादा दूर नहीं गई है गेंद, शॉर्ट मिड ऑन के फील्डर के हाथों पकड़े गए वहां पर कीर्तिराज और 1 विकेट गिर चुके हैं हंगरी वॉल्स के। तो इस तरह कीर्तिराज का इनिंग समाप्त हो चुके हैं। इनका स्थान नए बल्लेबाज 12 रन की जर्सी पहनते हुए राहुल मैदान पर उतर चुके हैं। 23 रन पर स्कोरबोर्ड टिकी हुई है। राहुल को थोड़ी बहुत कोशिश करनी चाहिए, 8 या 6-8 रन यदि बटोर पाते हैं तो कुछ अच्छी स्कोर बन सकती है। चलिए देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं। और अच्छी गेंद टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ स्विंग होती हुई ये गेंद विकेट कीपर के दस्तानों पर। इसी बीच इस बार उछाल दी, वहां पर कैच हो सकते हैं या फिर 6 गेंद बॉलना के बाहर जा चुकी है 4 रनों के लिए।
अब बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन, आखिरी मौके पर राहुल ने आकर एक बाउंड्री जड़ दी है। आखिरी गेंद बची हुई है इस इनिंग्स की और स्कोर बोर्ड 27 रन जमा हो चुके हैं। चलिए देखते हैं आखिरी गेंद पर। इस बार बल्लेबाज शफल होकर पुल करना चाहा, बल्ले पर नहीं आएगी गेंद। इनिंग्स की समाप्त हो चुकी है। जीतने के लिए 5 ओवरों में 28 रनों की जरूरत है इस एलिमिनेटर मैच पर। मैच का अगला आंखों देखा अब तक लाएंगे अंग्रेजी में हमारे साथी कमेंटेटर मिस्टर संदीप। Umpires, please let this match continue. After that, we will give a break of 5 minutes for both the teams. both the teams hoಯ್ತು ಇಂಡಿ ಟೀಮ್ ಆಕಲಿಗೆ ಯಾ ಬೈ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕಲ್ಲ. I request big boys, please send your opening batsmen. 28 will be the target. ಇಪ್ಪತ್ತ 8 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. After a lengthy discussion, Ankit and Rafiq are the two openers. Make their way into the field with the responsibility of getting 28 out of 30 deliveries. Ankit will be taking the guard. Non-striker will be Rafiq. The first over, power play over. Ankit takes a strike. Just single over of power play. Minimum 4 bowlers should be used. This is getting very interesting. The low score. We have witnessed a lot of low scoring games getting to the last over. Clever cricket is needed from both the teams. Let's see how big boys cope up with this one. Knockout tournament eliminator. The winner of this match will be facing Royal Strikers. We're all set for the eliminator. 28 is the target out of 30 deliveries. Ankit is in strike. Beautiful shot. Over, long gone for a crucial and exceptional. What a brilliant piece of fielding that is. What an exceptional piece of fielding that is. Just a single run have been awarded. Thanks to laziness of the batsmen there. What a brilliant exhibition of fielding from that fielder on mid-on there. Rafiq is on strike now. Things are getting very heated up now. Beautiful. But far away from the off-stump region is a call from the umpire. One more single.
through to the illegality. With that single, score sheet moves on to 2 on the board. Just a single delivery completed. Hungry Wolves have to be very careful with this line and length here. They have to be very careful because this is a do or die match. Took the edge of the bat into the point fielder's hand. They will cross for easy single. There is no chance. They won't take a chance with that misfield. They will be happy with the single. Just 2 deliveries completed in this over. 3 runs already on the score sheet. Power play is on here. Ankit and Rafiq will be looking to go for a big heaves here. So I request Hungry Wolves get on with the game here. So again took the outer edge of the bat. Exceptional bowling, I would say, from the bowler of Hungry Wolves. Remember, they are just playing with the face of the ball here, making the batsman wait for the balls. One more single. Score sheet moves on to 4 on the board after the completion of 3 deliveries. Rahul coming 4th time and short delivery, exceptional bowling, and I am waiting. What is going on? Loud appeal. Umpire says well inside the crease. Swaroop Ankit survives there. 4 deliveries completed. Things are coming in singles in the power play over. It was a brilliant ploy, I would say, from Rahul there, pitching the ball short, making the batsman jump high in the air. At last, they will get a single thanks to the edge of the bat from Rafiq. Rahul again. Again, edge of the bat. It should be curtains. Ankit will be coming back to the pavilion. Wicket tumbles. First blood have been drawn here. Roshan makes his way into the middle now. Roshan makes his way into the middle with the pressure of getting runs. More importantly, till now, Rahul has been splendid in this over, especially in the power play over. His accurate line and length is making the batsmen think twice here. More so, he is playing with the face and the bounce of the delivery is here. Let's see. Another one. Exceptional bowling. Wonderful over comes to an end. Just 5 runs, I think, from this over. Loud appeal. Umpire is unmoved. Umpire says ball has been dead. So after the completion of first over, score is 5 on the board. 5 ರನ್ನುಗಳು ಒಂದು ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 23 ರನ್ನುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಳಿದಿದೆ 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. Things are getting very tight here for big boys. Let's see who will be the next change bowler. Hardik will be the next change bowler. In the first 2 matches, he was out of colour. After that break of half an hour, he came to the field with fire on his eyes. Let's see, can he continue the good work here? Big boys got 5 from the first power play over. Hardik, can he continue the good work of Rahul? Rahul, bowler Hardik ata. So let's see what happens now. Hardik coming right arm over to the batsman Rafiq. Roshan just joined him there. Short pitch delivery. It is a hit play delivery. It's going long for sure. 6 is a goal for an umpire. Short of a length delivery. It was asking to be hit, and Rafiq obliges the opportunity for a mighty 6. What a wonderful shot that is. 11 on the board now.
Let's see what happens. Hardik. Over Vishwan again. Hammered. Hammered over mid wicket for a mighty six. And is a goal for the umpire again. Runs are flying. Rafiq taking the opportunity and making most of these opportunities. What a poor bowling exhibition. First one is a short pitch delivery with a low space, and this one is a over pitch one. First one is over square leg. This one is over mid wicket. Let's see what happened on this one. Another one. There is nobody covering that. Hat trick of boundaries. Four more. 16 runs from 3 deliveries. 16 runs from 3 deliveries. Score sheet reads 21 already on the score sheet. ಹೇಳಿ 7 more to win this match. 7 ಗೋಲುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಜಯಗಳಿಸಲು. Hardik is looking to finish this match very early. Another one, but unfortunately there is a fielder. Rafiq done his job. Rafiq was brilliant. What an exceptional innings this has been from Rafiq. He comes back. Nitin goes in. What a wonderful innings. And Hardik, you haven't bowled your best in this match for sure. Nitin goes there. I request Nitin, go fast. Make this match finish quicker. Nitin is in the middle. 7 more to win this match. Just 4 deliveries completed in this over. 2 more to be bowled. And captain of Hungry Wolves are having no clue here. First of all, their batting has been very impressive after that, thanks to the brilliant exhibition of bowling from Big Boys. And Big Boys are dominating the batting section too. Another short delivery. What is going on? Poorest of all deliveries. We are waiting for the decision from umpire. Let's see. 4 is the goal for umpire. 3 more to get. 3 more to get. 20 already from this over. I was talking about Rahul's first over, impressive first over, just went for 5 runs. More importantly, wicket of Ankit was captured there after the over of Hardik came, and he is leaking runs just because he is bowling poorest of all deliveries he bowled in the entire tournament. 20 runs already from this over. 3 more to win this match. Last 1 more delivery yet to be bowled. Let's see. Another one. High and handsome. And congratulations, you are into the qualifier. Big Boys played a big match. And what a wonderful innings it has been from Rafiq. I request the captain of Big Boys and Royal Strikers, please come for the toss here. Royal Strikers of Big Boys under the captain of David to toss ಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆ I request Rafiq, please come and collect your man of the match trophy for a wonderful all-round exhibition here. Big Boys under the Rafiq, David, please come and collect your man of the match trophy from our dignified guest. It's a request. Captain of I request Danu, the organizer.
our one of the best sponsors, Kabir sir, will honor Rafiq with that man of the match trophy. I request Rafiq, please collect your man of the match trophy from our beloved guest, Kabir Sheikh. K Associates owner Kabir Sheikh will take the honor of awarding our match eliminator man of the match winner Rafiq there. Thank you. It's over to Ajay sir for further part of this commentary. ಬಿಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಬಿಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. Remember, Super Kings, the last year champions, are already in the finals. We are deciding the second finalist here. So Royal Strikers have won the toss. They have a big decisions to make here. Let's see what they will decide. So they decided to field first. Big boys will be batting first. I request Royal Strikers, please take the field as soon as possible. We are losing lot of time here. It's already 1 in the night. Morning rather. It's over to Ajay Raj sir now.
हेलो चेक, हेलो चेक, स्कोरर स्कोरर कृपया, स्कोरर। थैंक यू, क्या बात है। तमाम दर्शकों का हृदय से स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं स्विस प्रीमियर लीग 2025 और मेरी टीम इस वक्त यहां पर कार्यरत है। उन सभी को प्रणाम करता हूं और इस अनुमति के साथ कि एक आध 4-5 ओवर्स में भी आपके साथ माइक को साझा करूं। प्रशांत जो कि आपको अंग्रेजी में विवरण सुना रहे थे, संदीप माफ कीजिएगा प्रशांत कन्नड़ में, संदीप अंग्रेजी में और संतोष पंडित जो कि आपको हिंदी में विवरण सुना रहे थे। अजय राज के प्रणाम स्वीकार करें। आप देख रहे हैं स्विस प्रीमियर लीग 2025 और हैट्स ऑफ कहना होगा श्री कबीर शेख जी को, जिनकी बागडोर में, जिनके नेतृत्व में, जिनके सहयोग से ये शानदार क्रिकेट श्रृंखला जो कि रचाई गई है। इस वक्त बिग बॉयज और रॉयल स्ट्राइकर्स के बीच में मुकाबला हो रहा है। निर्धारित 5 ओवर्स का रॉयल स्ट्राइकर्स के कप्तान ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का उनका फैसला है। क्या होगा, कितना दमखम, कितना रोमांच देखने को मिलता है। इस छोर से राउंड विकेट ऑफ स्टंप के बाहर थी, क्या कमाल की गेंद स्विंग होकर गुड लेंथ स्पॉट से गिरने के पश्चात बाहर की तरफ निकली। पैरों का ज्यादा मूवमेंट नहीं था, फ्रंट फुट पर थोड़ा आधे अधूरे मन से डिफेंसिव स्ट्रोक खेलने का प्रयास चूक गए। विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया और गेंदबाज को गेंद को सौंप चुके हैं। इस छोर पर आक्रमण पर धनु की एक और गेंद, क्या कमाल की गेंद थी, तेज रफ्तार की है गेंद। धनु जो कि आप जानते हैं वो बॉडी बिल्डर हैं और मास बिल्कुल मसल मैन जिसे कहते हैं, और मसल मैन जब गेंदबाजी करता है तो इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि क्रिकेटर्स के लिए एक्सरसाइज व्यायाम कुछ अलग तरीके का होता है और बॉडी बिल्डर्स बिल्कुल अलग व्यायाम करते हैं। इमारत छोर से महाविद्यालय के राउंड विकेट, ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी और बैट्समैन को बॉल कर गए, कमाल की गेंद। यूएसबी आई हिट यू। नासिक बैंड, अगर मैं गलत ना हूं तो इस वक्त यहां पर मौजूद हैं और मुकामी का चंडे, जी हां, क्या बात है, पूरे टीम उनकी मौजूद है। क्या कमाल का धुन वो बजा रहे हैं, इस वातावरण को अपने धुनों से बिल्कुल और स्तर को बढ़ाकर वो ले जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धनराज इतने शानदार गेंदबाज मैं जानता ही नहीं था, मैं तो सिर्फ सोचता था कि वो बहुत शानदार कमाल की बॉडी बिल्डर हैं और
इस छोर पर वो गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। अभी अभी उन्होंने इलेक्ट्रॉल पीकर अपने आप को दोबारा तंदुरुस्त कर लिया और एक शानदार विकेट वो अर्जित कर चुके हैं, एक शिकार वो प्राप्त कर चुके हैं। शानदार मौसम है इस वक्त, समय अगले दिन का 1:25 हो चुके हैं। जी हाँ, और आकाश अंधेरों में डूबा हुआ सह्याद्री महाविद्यालय का नेशनल हाईवे के बगल में स्थित ये मैदान। धनराज आक्रमण पर ओद विकेट, उनकी गेंद ड्राइव कर दिया, जड़ से निकालकर गेंद को खेल दिया। सुंदर स्ट्रोक है, खूबसूरती से भरा हुआ। मिड ऑफ पे फील्डर मौजूद है, उन्होंने गेंद को उठा लिया, लेकिन इस दौरान बैट्समैन के पास, बैटर के पास 1 रन लेने का अवसर इस एक के साथ कुल योग पहला रन जो कि बन चुका है। एक और गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। ये गेंद फुल टॉस थी, हवा में गेंद को उछाल दिया, स्क्वायर लेग के फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं। मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में जो खिलाड़ी तैनात थे उन्होंने गेंद को दौड़कर थोड़ा सा डाइव लगाया, शरीर का संतुलन बिगड़ गया, अपने आप को संभाल लिया, गेंद को उन्होंने बाउंड्री लाइन के अंदर रोक लिया और इससे पहले वो गेंद को रोक कर थ्रो कर पाए। बैटर्स के पास 2 रनों को बटोरने का समय था और इन 2 रनों के 7 रन बढ़कर पहुंच चुका है। 3 पर रफी स्ट्राइक एंड पर। धनराज की गेंद, रफी ने गेंद को पुल कर दिया प्लेसमेंट के साथ, बहुत कमाल का स्ट्रोक है, गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर गई और ये शानदार 4 रन। तो एलिमिनेटेड के मैन ऑफ द मैच रहे हैं रफी। क्या कमाल का स्ट्रोक था उनका, ये गेंद लेंस से जैसे ही ऊपर उठी, प्रहार किया, पुल किया गेंद को ऑन साइड की दिशा में, हालांकि मिड ऑन डीप की दिशा में गेंद को उन्होंने पुल कर दिया था। तेज तर्रार स्ट्रोक था, बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर दम तोड़ गई और इस चौके के साथ ओवर समाप्त हुआ। पहले ओवर की समाप्ति पर कुल मिलाकर रन बन चुके हैं 7 बगैर किसी आघात, माफ कीजिएगा 1 विकेट के नुकसान पर, 7 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। दूसरा ओवर इस वक्त शुरू होने जा रहा है और आक्रमण पर इस वक्त नेशनल हाईवे एंड से गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। दीपू गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। स्ट्राइक एंड पर इस वक्त बैटर रोशन तैयार रहे, तो दीपू की गेंद, रोशन बल्ले को थाम कर तैयार। दूधिया और रोशनी, सुनहरी रोशनी में ये मैदान इस वक्त बहुत सुंदर दिखाई पड़ता हुआ। उस छोर से ये गेंद, पटकी हुई गेंद ज्यादा उछल कर आई, अंपायर ने थोड़ी देर देखते हुए फिर अपने दोनों हाथों को फैलाया और बॉडी बिल्डर्स की भाषा में कहें तो लैटरल रेज उन्होंने किया। 1 रन अतिरिक्त मिल चुका है, बाउंसर थी, कंधों का ज्यादा उपयोग था और इस 1 रन के साथ कुल योग बढ़ चुका है। दूर वाले छोर से नेशनल हाईवे से ये गेंद इस बार उछाल कर गेंद को खेल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद है। क्या कमाल की फील्डिंग है, जादूगरी है, टो पर उछलकर इस संभावित छक्के को उन्होंने अंदर की तरफ ढकेल दिया। निश्चित तौर पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही थी, मात्र 1 रन से खुश होना पड़ा बैटर को। इस 1 रन के 7 रन बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 पर 1 विकेट के नुकसान पर, 9 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। इस वक्त स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन रफी बल्ले को कंधों पर रखकर एक शेर की तरह इधर उधर टहल रहे हैं, फिर तैयार हो रहे हैं और प्लेयर ऑफ द मैच पिछले एलिमिनेटर राउंड में रहे। एक और गेंद और रफी ने गेंद को घुमाकर खेल दिया, लेकिन पूरा विश्वसनीय स्ट्रोक रही था, सीध पर थी, स्टंप्स के मिडल और लेग स्टंप के लाइन पर, थोड़ा सा आड़े बल्ले से घुमाकर गेंद को खेल दिया। 1 रन लेने का अवसर बैटर के पास और इस 1 रन के साथ कुल रन संख्या बढ़कर 10 पर पहुंच चुका है, 1 विकेट के नुकसान पर, 10 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। रात हो चुकी, उसके पश्चात नया सवेरा आ गया, लेकिन क्रिकेट अपने उस उत्साह के चरम सीमा पर दिखाई पड़ता है। ये गेंद ड्राइव कर दिया, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड कर लिया गेंदबाज ने, रन अभी भी वहीं पर स्थिर है। दीपू आक्रमण पर है और नेशनल हाईवे से उनकी इस ओवर की एक और गेंद और इस बार कमाल का स्ट्रोक, लेकिन फंस गए, लॉन्ग ऑन के फील्डर ने गेंद को कैच कर लिया, शानदार कैच और इसी के साथ बैट्समैन आउट हो गए। क्या बात है, जबरदस्त धुन और ढोल नगाड़े जिसे मजाकिया भाषा में अगर कहें, और ये कैच लॉन्ग ऑन क्षेत्र में फील्डर ने बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को कैच कर लिया और इस कैच के साथ ही 1 और विकेट गिर चुका है। संख्या विकेटों की बढ़कर 2 पर, कुल रन संख्या है
10 पर 10 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। आक्रमण पर अभी भी दीपू उस छोर पर तैयार हो रहे हैं और स्ट्राइक एंड पर नितिन अंपायर से गाल लेने के पश्चात तैयार हो रहा है। स्ट्राइक एंड पर नितिन है उस छोर से, ये गेंद और द विकेट दीपू की गेंद नितिन के लिए। नितिन ने गेंद को हवा के रास्ते, जी हां, बहुत दूर क्रॉसों दूर उछाल दिया 6 रनों के लिए। नितिन ने दिखा दिया कि मसल पावर क्या होता है। ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, टिप्पा खाकर उछल कर आई, उसको पुल कर दिया उन्होंने। एक और गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, परिवर्तन था इस बार, दिशा को बदलते हुए गेंद ऑफ स्टंप के बाहर निकल गई, जिसको खेलने के प्रयास में बीट हो गए। विकेट कीपर ने अपना काम कर लिया, ओवर समाप्त हो चुका है। कुल मिलाकर संख्या ओवर की बढ़कर पहुंच चुकी है 2 पर। After the completion of 2 overs, score is on 16 for the loss of 2 wickets। आप देख रहे हैं जुइस प्रीमियर लीग 2025। हालांकि के एसोसिएट्स के श्री कबीर शेख, उनको हैट्स ऑफ कहना होगा, उनकी बदौलत इस क्रिकेट श्रृंखला की रचना की गई है। और जितने सारे खिलाड़ी जुइस फिटनेस के में कार्यरत हैं, मैं कहूंगा कि उनके लिए तो प्लेटफॉर्म है, उनके लिए एक उत्सव है, क्रिकेट का महोत्सव है। इस क्रिकेट श्रृंखला को बनाकर कबीर जी ने उन सारे खिलाड़ियों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिस पर वो अपने क्रिकेटिंग स्किल का प्रदर्शन करें। नया ताजा ओवर, तीसरे ओवर की शुरुआत के लिए इस छोर पर शानदार एलईडी स्क्रीन दूर आप देख रहे हैं। तो धनराज इमारत छोर से, इस सह्याद्री महाविद्यालय के इमारत छोर से गेंद को लेकर वो तैयार हो रहे हैं और रफी स्ट्राइक एंड पर। ये बहुत अच्छा मुकाबला है। धनराज बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछले ओवर में 1 विकेट उन्होंने प्राप्त कर लिया, अपने कोटे का दूसरा, पारी का तीसरा ओवर कर रहे हैं। और स्ट्राइक एंड पर पिछले मैच के एलिमिनेटर राउंड के मैन ऑफ द मैच के, प्लेयर ऑफ द मैच के पुरस्कार प्राप्त करने वाले रफी स्ट्राइक एंड पर है। इस छोर से ये गेंद और 2 विकेट धनराज की। इस बार खेलने के प्रयास में थोड़ा पिछले पैर के घुटनों को झुकाया, गेंद को खेलने के प्रयास में बीट हो गए, शायद बल्ले से लगी नहीं, अंपायर ने कोई संकेत नहीं किया, फिर उन्होंने कहा कि लग गए। 1 रन का इजाफा हो चुका है, कुल योग बढ़कर अब 18 पर पहुंच चुका है। 2 विकेटों के नुकसान पर 18। एक और गेंद और इस पर भी रन लेने का अवसर बैट्समैन के पास, बैटर के पास नहीं है। फील्डिंग की रूपरेखा आपको बता दें, ऑफसाइड पर धनराज ने जो फील्डिंग प्लेसमेंट लगाई है उसमें थर्ड मैन थोड़ा सा दायरे के अंदर है, पॉइंट थोड़ा सा वाइड है, एक्स्ट्रा कवर दायरे के अंदर, इस क्षेत्ररक्षण के साथ ऑफसाइड पर, माफ कीजिएगा, ये गेंद ऑन साइड पर पुल कर दिया। शॉट ऑफ गुड लेंथ थी, क्षमा प्रार्थी, रन 17, इस 1 रन को मिलाकर 18 बन चुके हैं। 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और गेंद को पुल कर दिया था धनराज, जानबूझकर गेंद को थोड़ा सा रफ्तार ज्यादा देकर थोड़ा सा बाउंस लाने का प्रयास कर रहे हैं। धनराज की एक और गेंद और 2 विकेट। इस बार बहुत अच्छी गेंद बीट कर गई बैट्समैन को, विकेट कीपर को थोड़ा तो पर उछल कर इस गेंद को गैदर करना पड़ा। और कहीं ना कहीं हल्की सी अपील धनराज कर रहे थे अंपायर से कि कॉट बिहाइंड है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बैट्समैन सुरक्षित है। रफी स्ट्राइक एंड पर, इस छोर से धनराज की इस ओवर की एक और गेंद दौड़ना शुरू कर दिया। इस बार बहुत अच्छी गेंद, लगातार बैट्समैन को, बैटर को बीट करती हुई गेंद। धनराज कहां से ढूंढ कर निकालते हैं गेंद, पता ही नहीं था वो छुपे रुस्तम है, मात्र बॉडी बिल्डर्स दिखाई पड़ रहे थे, अंदर उनका क्रिकेटिंग स्किल जो कि बचा हुआ है और शानदार गेंदबाजी उनकी चल रही, बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में वो गेंदबाजी करते हैं। और 2 विकेट इस छोर से एक और गेंद, इस बार गेंद को उछाल दिया, कैच होगा जी नहीं, फील्डर काफी डीप में खड़े हैं। 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ ही ये ओवर समाप्त हो चुका है, तो ओवर की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है, 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स, स्कोर इज ऑन 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। आप देख रहे हैं जुइस प्रीमियर लीग 2025।
तो मुकाम्बिका चंडे के इस वक्त जितने सारे लोग हैं वो खामोश बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको मौका मिले, चौका छक्का या विकेट्स, तो वो अपनी तरफ से धुन को बजाकर दर्शकों का मन जीते, इस प्रयास में वो इंतजार में बैठे हुए हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा कुछ जल्दी हो जाए, उनको अवसर मिले और धुन को सुनने का अवसर हमें भी मिल सकता है। दूर वाले छोर से नेशनल हाईवे एन पर आप जुगनू की तरह टिमटिमाती हुई रोशनी देख रहे हैं, जो नेशनल हाईवे में वाहनों का आना जाना दिखाई पड़ रहा है। शानदार दृश्य है, आकाश अंधेरों में डूबा हुआ है। दूर वाले छोर से ये गेंद लेग स्टंप के बाहर, दिशाहीन गेंद थी, फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं, अंपायर दोनों हाथों को फैला चुके हैं। दौड़ और वाइड को मिलाकर 2 रन खाते में जोड़ लिए गए। इन दो रनों के साथ ही कुल योग बढ़कर अब पहुंच चुका है 21 पर 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ऐसे में कितना बड़ा लक्ष्य बन पाएगा? निर्धारित 5 ओवर का छोटा फॉर्मेट है, बैट्समैन के पास ज्यादा समय नहीं है कि वो सेट हो जाएं। क्या होगा? दूर वाले छोर से एक और गेंद, इस बार लॉफ्ट कर दिया, गेंद को पुल कर दिया खूबसूरती से। जी हां, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद जा चुकी है। 1 रन आसानी के साथ बैटर्स पूरा कर चुके हैं। 1 रन के साथ रन बढ़कर 22 पर 22 फॉर 2 और चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर चल रहा है। रन्स कम बने हैं क्योंकि अगर आप 5 ओवर्स को देखें तो अंदाजन 30 गेंदें फेंकी जाती हैं और उस छोर से ये गेंद, और क्या जबरदस्त अद्भुत स्ट्रोक है, धमाकेदार स्ट्रोक मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो इस धमाकेदार स्ट्रोक की प्रायोजक थे जुइस प्रीमियर लीग 2025 और अवसर मिला मेरे मित्रों को जो धुन बजाने के लिए तैयार थे। क्या कमाल का स्ट्रोक था, पटकी हुई गेंद थी और पोजीशन बनाते हुए विकेटों को कवर किया संतुलित शरीर के साथ। मिड विकेट के ऊपर से गेंद को कोसों दूर दर्शक दीर्घा में उछाल दिया 6 रनों के लिए। दूर वाले छोर से एक और गेंद को लेकर गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। उनकी गेंद और ऑफ स्टंप के बाहर थी, आक्रामक तरीके से थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल बल्ले से गेंद को पुल करने का प्रयास मिस कर गए। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया, रन लेने का अवसर बिल्कुल नहीं है। तो रन कुल मिलाकर बन चुके हैं 28 28 फॉर 2, 28 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। एक और गेंद इस ओवर की फुल टॉस थी, ज्यादा फुल टॉस और अंपायर को मजबूर होना पड़ा। एक और बार वो लैटरल रेस कर रहे हैं। उन्होंने दोनों हाथों को फैलाकर कहा कि ये गेंद वाइड है। एक और अतिरिक्त रन, इस 1 रन के साथ रन बढ़कर 29 पर 29 फॉर 2, 29 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और रन सब धीरे धीरे रफ्तार ले रही हैं। ऐसे में रनों को रोकने का प्रयास गेंदबाज कर रहे हैं। एक और गेंद फुल टॉस थी, लेकिन इस बार शायद अंपायर ने इस गेंद को लीगल करार दिया गया हो और ड्राइव करने के प्रयास में बाई के रूप में 1 रन लेने का अवसर। फुल टॉस जरूर थी लेकिन थोड़ा सा डिप कर रही थी नीचे की दिशा में, जिसकी वजह से अंपायर ने बहुत बारीकी से देखते हुए इस गेंद को लीगल करार दिया। 1 और रन के साथ कुल योग बढ़कर अब पहुंच चुका है 30 पर 30 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 30 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर की एक और गेंद और उछालने का प्रयास, विकेट कीपर एक्शन में है, उन्होंने गेंद को उठा लिया, स्ट्राइक एंड की दिशा में थ्रो कर चुके हैं, लेकिन 1 रन पूरा हो चुका है। 1 रन के साथ रन बढ़कर 31 पर। तालियां बज रही हैं इस वक्त इस छोर पर। बिग बॉयज के सारे चाहने वाले तालियां बजा रहे हैं और उनको देखकर लगता है कि वो बिग बॉयज हैं। सब मसल मैन हैं जिनके टी शर्ट में बहुत फिट दिखाई पड़ते हैं। उस छोर से इस ओवर की एक और गेंद, इस बार हवा में खेल दिया है, कैच हो सकता है। विकेट कीपर और फील्डर बहुत दूर रह गए, जब तक पीछा करते हुए विकेट कीपर गेंद को उठाकर थ्रो कर पाए। दोनों बैटर्स ने तेज कदमों के साथ 2 रनों को पूरा कर लिया और इन 2 रनों के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। तो संख्या ओवर की बढ़कर पहुंच चुकी है 4 और 4 ओवर की समाप्ति पर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर स्कोर इज ऑन 33 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। आप देख रहे हैं जुइस प्रीमियर लीग 2025 सीजन। जी हां, पहला सीजन, दूसरा सीजन हो सकता है।
क्षमा प्रार्थी, चौथा सीजन इस वक्त चल रहा है और जलपान के बहाने कहीं ना कहीं टिप्स दिया जाता है, ये योजना रहती है और शानदार खेल चल रहा है। दोनों बैटर्स अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि एक सम्मानजनक लक्ष्य वो बनाए अपने टीम के लिए। बिग बॉयज चाहते हैं कि बड़े रन्स बने, बड़े स्ट्रोक्स लगे, ताकि एक बहुत बड़ा विशाल स्कोर खड़ा हो। आखिरी निर्णायक इस पारी का ओवर लेकर इस छोर पर बॉलर्स नेम प्लीज, बॉलर्स नेम मोहित आक्रमण पर आ रहे हैं और मोहित के सामने स्ट्राइकर एंड पर इस वक्त रफी तैयार हो। नितिन माफ कीजिएगा, मोहित की गेंद नितिन के लिए, नितिन ने गेंद को हवा में उछाल दिया, फील्डर वहां पर मौजूद है। सिर्फ एक रन लेने का अवसर बैटर को प्राप्त होगा। इस एक रन के साथ रन बढ़कर अब पहुंच चुका है 34 पर 34 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 34 रन 2 विकेटों के नुकसान पर आखिरी ओवर चल रहा है। गेंदबाज और विकेट कीपर के बीच में आपस में गुफ्तगू हो चुकी है, शब्दों का लेन देन हो चुका है, कुछ न कुछ वो राज की बात बता रहे हैं, कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। ऐसे में क्या होगा और मोहित आक्रमण पर तैयार, रफी स्ट्राइकर पर पहुंच चुके हैं। रफी कदकाठी में छोटे हैं लेकिन छोटा पैकेट और बड़ा धमाका हो सकता है। ये गेंद अच्छी गेंद थी और ड्राइव करने के प्रयास में चूक गए, लेकिन अंपायर ने कहा कि ये अच्छी नहीं, दिशाहीन गेंद थी। जी हां, वाइड घोषित कर दिया उन्होंने इस गेंद को। इस एक रन के साथ रन संख्या बढ़कर 35 पर पहुंच चुका है, 35 for 2। और अभी भी रफी जो कि स्ट्राइक एंड पर तैयार हो रहे हैं। मोहित की गेंद को साथ, जी हाँ, उनका मोहित की गेंद का सामना करने के लिए घुमाकर गेंद को ऑन साइड की दिशा में मिड विकेट क्षेत्र में खेल दिया। वहां पर फील्डर थोड़े से झुककर हड़बड़ाते हुए उन्होंने गेंद को समेट लिया, जैसे तैसे गेंद को फील्ड कर लिया। लेकिन इस दौरान एक रन लेने का अवसर बैटर्स के पास था। इस एक रन के साथ रन बढ़कर 36 पर पहुंच चुका है 2 विकेटों के नुकसान पर। 36 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। आखिरी ओवर प्रगति पर चल रहा है। ओ द विकेट ऑफ सब के ज्यादा बाहर थे, दिशाहीन गेंद, ज्यादा जोर देने के प्रयास में गेंद टप्पा खाने के बाद कुछ बाउंस होकर बाहर की तरफ निकली। एक और रन अतिरिक्त के खाते में, रन बढ़कर 37 पर 37 for 2। ओ द विकेट इस बार हवा में उछाल दिया, कैच हो सकता है, फील्डर गेंद के नीचे आ गए। क्या कमाल का कैच है, अपना सब कुछ धोकर गेंद को कैच कर दिया। एक और विकेट। क्या बात है, नितिन ने बहुत शानदार बल्लेबाजी करने का प्रदर्शन किया। 9 रन उन्होंने बनाया, तालियां उनके लिए बज रही हैं। हर एक रन बहुत कीमती है, सोने के गिन्नी की तरह। क्या बात है, एक रन से मैच को जीता जा सकता है, हारा जा सकता है। इस वजह से नितिन की हौसला अफजाई की गई डगआउट में और नए बैट्समैन का आगमन। मोहित आक्रमण पर, आशद इस वक्त स्ट्राइक एंड पर पहुंच चुके हैं। इस छोर से ये गेंद मोहित की गेंद, आशद स्ट्राइक एंड पर और आशद ने गेंद को उछाल दिया। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक है, फील्डर गेंद को नहीं रोक पाएंगे। लॉन्ग आउट बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। आशद के बल्ले से आशा की किरणें उत्पन्न हुई। क्या जबरदस्त छक्का उन्होंने लगाकर दिखा दिया कि अभी और दमखम बाकी है और कमाल के स्ट्रोक्स लग सकते हैं। 2 गेंदें शेष बची हैं और रफी उनको समझा रहे हैं इस वक्त। 2 more balls to go और इस छक्के के साथ कुल योग बढ़कर 43 पर पहुंच चुका है। 43 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 43 रन माफ कीजिएगा। ऑन साइड पर घुमाकर खेलने का प्रयास, बहुत अच्छी गेंद, बोल्ड हो गए। एक और विकेट का पतन हुआ। Batsman name please. Batsman name.
रवि इस वक्त स्ट्राइक एंड एंड की दिशा में जा रहे हैं। रफी रिटायर्ड हर्ट हो रहे हैं और जी हाँ, जब आप जिम में व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रफी के लिए तालियां बज रही हैं। क्या बात है, बजनी चाहिए। क्या शानदार बल्लेबाजी उन्होंने की है और तालियों से उनका स्वागत किया जा रहा है। इस छोर से इस ओवर की आखिरी गेंद, इस बार ड्राइव किया गेंद को, फॉलो थ्रू में गेंद को उठाकर थ्रो करने से पहले एक रन पूरा हुआ, दूसरे रन के लिए दौड़ लगाई और तीसरे रन के लिए दौड़ना चाहते हैं। रन आउट का मौका शायद ही बने। तीसरे अंपायर इस वक्त एक्शन में है, तो बहुत नजदीकी मामला है और अंपायर ने इस नतीजे को निकालने के लिए तीसरे अंपायर का सहारा लिया है। तो देखते हैं कि आखिर हुआ क्या है और क्या बैट्समैन क्रीज को पूरा कर गए या क्रीज से रह गए। तो बैट्समैन बैटर आउट हो चुके हैं। अंपायर ने, तीसरे अंपायर ने संकेत किया। तो आइए आपको रन्स बता दें। कुल मिलाकर 45 रन, 45 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स और 46 रनों का लक्ष्य इस मैच को जीतने का। 5 विकेट खींच चुके हैं और बिग बॉयज ने 45 रन बनाए। 46 रनों का 46 का टारगेट वो रख चुके हैं रॉयल स्ट्राइकर्स के सामने। और रॉयल स्ट्राइकर्स क्या 46 रनों को बना पाएगा निर्धारित 5 ओवर्स में, ये सब देखने वाली बात होगी। बड़ा दिलचस्प मुकाबला चल रहा है। आप देख रहे हैं स्विस प्रीमियर लीग 2025 और शब्दों को विराम, भाषा में बदलाव। आगे के विवरण के लिए कन्नड़ में बहुत शानदार तरीके से प्रशांत जी आपको विवरण सुनाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है।
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಯ್ ರಾಜ್ ಮಂಗಳೂರವರೇ ಇಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವರ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಕ್ಕಾಗಿ. ಅಂಕಣದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಸುತ್ತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಷನ್ ಆರಂಭವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಜಿಯೋಸ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಮಿತ ಬವರ್ಗಳ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ಓವರ್ ಆರ್ಮ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವ ಒಂದು ತೇರ್ಗಡೆಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಈ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 40. ಆರೋಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಸದ್ಯದ ಮೊದಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಒಂದೆಡೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಅವರ ಜೊತೆಗಾಗಿ ತಂಡದ ಮತ್ತೊರು ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಆಟಗಾರ ಯತೀಶ್ ಅಂಕಣದೊಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆಗಾರನಾಗಿ ಶುಭಿ ಈ ಬಾರಿ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಈ ಬಾರಿ ತನ್ನ ಕತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವರೂಪ್ ದಾಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮೊದಲ ಬೌಂಡರಿಯೂ ಕೂಡ ಈಗ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆ, ಅದು ತಂಡದ ಖಾತೆಯನ್ನ ಬೌಂಡರಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಆಟಗಾರ ಸ್ವರೂಪ್ ಈ ಬಾರಿ ತಂಡದ ನಿಖರ ಫಲಿತಾಂಶದ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂಕಣದೊಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 29 ಚೆಂಡುಗಳು 42 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಬ್ಯಾಕ್ಔಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಅಪರೂಪದ ಬೊಗಸೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಉದರಿ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಭಂಗಿಯ ಹೊಡೆತದಲ್ಲಿ ಎಳವಿಕೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಆಟಗಾರ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವರೂಪ್ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಮರಳಿದ್ರು. ಅಬ್ಬರದ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಆಟಗಾರ ಈ ಬಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸದೆ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಮರಳಿದ್ರು. ಪ್ರಥಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಜೊತೆಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ತಂಡದ ಮತ್ತೊರು ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಆಟಗಾರ ಧನು ಅಂಕಣದೊಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಮೂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅಂಕಣದೊಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಧನು ಯತಿ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓವರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಶುಭಿ ಈ ಬಾರಿ. ತದನಂತರ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಓವರ್ನ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ. ಮಧ್ಯೆ ಕಾಟ್ ಬಿಯಾನ್ಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಮುಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಗೂಟದ ಹಿಂಭಾಗದ ಗಾರುಡಿಗ ಈ ಬಾರಿ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಚೇತರಿಕೆ ಜೀವದಾನಗಳು ಕೂಡ ಧನುಗೆ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಂತದ ಜೀವದಾನಗಳು ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಿಸುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ. ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜೀವದಾನಗಳು ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣಗಳಾಗಿ ತಿರುವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ತನ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 5ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಶುಭಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಬಾರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸುಭಿಜಿತ್. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಗೂಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೈಸ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ತಡ ಮೊತ್ತ 6ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು 10 ರನ್ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಸದ್ಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಬಡಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆಯ ಆರಂಭವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಜೊತೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಔಟ್ರೇಜ್ ಆಗಿರಕತ್ತ ಚೆಂಡು
ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆಯೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ 6 ಚೆಂಡು. ಆರಂಭಿಕ ಉದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 7ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 24 ಚೆಂಡು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 39 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಚರಣ್ ಅನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಗ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಕಣವಾಗಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಕೂಟ. ಗೆದ್ದ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಸುತ್ತಿಗೆ ತೇರ್ಗಡೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪರಾಜಿತ ತಂಡ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಸುತ್ತಿನಿಂದ ನಿರ್ಗಮನದ ಹಾದಿಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ZPL 2025 ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಸುತ್ತಿಗಾಗಿ ತೇರ್ಗಡೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ಕಾಣುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ದಾಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಷನ್ ನ ಪ್ರಥಮ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ಈಗ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ತಳಮತ್ತ 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 13ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಚರಣಿ ಬಾರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಟಾಪೇಜ್ ಆಗಿರಕ್ಕಂತ ಚೆಂಡು. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲಯವನ್ನ ಕಾಣುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಎಸೆಗಾರ ಶರಣಿ ಬಾರಿ. ಓವರ್ನ 3ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಶರಣಿ ಬಾರಿ. ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಆಯ ತಪ್ಪಿದಾಡುತ್ತಾ ಚೆಂಡು ಗೂಟದ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರಿ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಶರಣಿ ಬಾರಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಧನು ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ವಾಪಸಾತಿಯನ್ನ ಕಂಡ್ರು. ಈ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದರಿ ಸ್ವರೂಪ್ ಕೂಡ ಬೌಂಡರಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ರು. ತದನಂತರ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಬಾರಿ ಧನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಡಿಲ ಬರೆದ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿ ಜಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಮರಳಿದ್ರು. ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಜೊತೆ ಆಟಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಕಣದೊಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಪು ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ನ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡಿ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓವರ್ನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ದೀಪುಗೆ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡು. ಸುಂದರತೆಯ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಲ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡು. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ ಕೇವಲ 13ರಲ್ಲೇ ಸ್ಥಗಿತತೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರೆಗೆ ಓಟಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ದಾಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಡ್ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ. ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ 10 ರನ್ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಈ ಬಾರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಿಂದ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
ರಾಯಲ್ ಶೈಕಾಸಿ ಬಾರಿ. ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಉದ್ದರಿ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯತಿ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಹತಿಯನ್ನ ಕಂಡ್ರು. ಮೂರನೇ ಉದ್ದರಿ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕಕ್ಕಾಗಿ ಮೋಹಿತ್ ಅಂಕಣದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾರಿ. ಅಂತಿಮ 18 ಚೆಂಡು. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 32 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ನಿತಿನ್ ಅನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವಂತ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಎಸಗಾರರು ಈ ಬಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ತಂಡದ ಈ ಎಲ್ಲ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಸಗಾರ ಶ್ರಮ ಕೂಡ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಾರಿ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ನಿತಿನ್ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ಗಳ ಪರವಾಗಿ. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಂಕಣದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ದೀಪು ಪರಿಚಯ ಕಂಡ್ರೆ ಅವರ ಜೊತೆಗಾಗಿ ಮೋಹಿತ್ ರಾಜ್ ಅಂಕಣದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ಕಾಣುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬೊಗಸೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಉದ್ದರಿ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದೀಪು ವಾಪಸ್ ಹತಿಯನ್ನ ಕಂಡ್ರು. ಔಟ್ ಆದ ಆಟಗಾರರ ಜಾಗವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅರುಣ್ ಅಂಕಣದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಆಟಗಾರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರದರ್ಶನವಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಬಾರಿ. ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರರು ಅಂಕಣದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಾತೊರಬೇಕಾದಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದಿಗ್ಧ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಓವರ್ನ ಯಶಸ್ವಿ 1 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 1 ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿತಿನ್ ಈ ಬಾರಿ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 17 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 32 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡರ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ದಾಂಡಿಗನನ್ನ ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿತಿನ್ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಎಸಗಾರನಾಗಿ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಆಪತ್ಕಾಲದ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವನಾಗಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓವರ್ನ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಂತ ಚೆಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಅರುಣ್ ಪೂರೈಸಿದ್ರು. ತಂಡ ಮೊತ್ತ 15ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 31 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 15 ಚೆಂಡು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 31 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಓವರ್ನ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಿತಿನ್ ಈ ಬಾರಿ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ಕಾಣುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಓವರ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಚೆಂಡು. ಬ್ಲಾಕ್ ಆಲ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡು. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 15ರಲ್ಲೇ ಸ್ಥಗಿತತೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ 13 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಖರ ಫಲಿತಾಂಶ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 31 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಿತಿನ್ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ
ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಬಲ್ಲಂತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಓವರ್ ಈ ಬಾರಿ ಅತಿರಿಕ್ತಗಳಾಗಿ ವಿಳಂಬವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಡ ಮೊತ್ತ 16, ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 30 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 13 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ 12 ಚೆಂಡು 30 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ಕಾಣುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ನೆಟ್ಟ ನೇರ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೇವಲ 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ತಡ ಮೊತ್ತ 17ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 12 ಚೆಂಡು 29 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 14.50 ರನ್ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಸುತ್ತಿಗೆ ನೇರ ತೇರ್ಗಡೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಲೆ ಕೆಳಗಾದ್ರೆ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ನಿರ್ಗಮನದ ಹಾದಿ ಸುಗಮವೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ಕಾಣುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅವರ ಭಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ. ತಡ ಮೊತ್ತ 23ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಕೂಡ. ಅಂತಿಮ 10 ಚೆಂಡು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 22 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚರಣಿ ಬಾರಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಎಸೆಗಾರನಾಗಿ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಶರಣ್. ಈ ಬಾರಿ ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ಕಾಣುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಹಳಷ್ಟು ನೆಗೆತದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೇವಲ 1 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಡ ಮೊತ್ತ 25, ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 21 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 9 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಜೊತೆ ಆಟದಲ್ಲಿ. ಶರಣ್ ಈ ಬಾರಿ ಬವರ್ನ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಗಳ ಪರವಾಗಿ. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಉದ್ದರಿ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಾರಿ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ತಂಡದ ನಂಬುಗೆ ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಎಡವಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಗೆಲುವಿನ ಕನಸು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಘ್ನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಣದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕಕ್ಕಾಗಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಅಂಕಣದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆರೋನ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಜೊತೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಜಯದ ಲಯವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶರಣ್ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸಿನ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂತಿಮ 8 ಚೆಂಡು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 21 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಏತನ್ ಮಧ್ಯೆ ಗೂಟದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೋರಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇತರ ಮಧ್ಯೆ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ವೈಡ್ +1 ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 2 ಚೆಂಡು, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 8 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಾರಿ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 19 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈತರ ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಘ್ನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಡ ಮೊತ್ತ 28ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಚರಣ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಾರಿ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 18 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಆಗಿ ಎಸೆದ್ರು. ಅಕ್ರಾಸ್ ಲೈನ್ ಹೊರಭಾಗದನ್ನ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ತಡಮೊತ್ತ 29. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 17 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಚೆಂಡು. ನೆಲ್ಸನ್ 1 ಓಟವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ತಡ ಮೊತ್ತ 30 ಓಟಗಳು. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡು. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 16 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಖರ ದಾಳಿಯನ್ನ ಸಂಘಟಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಂಡದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಎಸೆಗಾರ, ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೌಲರ್, ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಎಸೆಗಾರ ಪ್ರಮೀಕ್ ಈ ಬಾರಿ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡು. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 16 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. मेडिकल को बात बोले मेडिसिन से बात बोले फील्डर चेंज फर्स्ट एड बॉक्स फील्डर चेंज फील्डर चेंज ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡು. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 16 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರಮೀಕ್ನನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡ ಈ ಬಾರಿ ಅಂಕಣದೊಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದಾಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಚೆಂಡು. ನೆಲ್ಸನ್ ಎಡವಿಕೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ತಡ ಮೊತ್ತ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ 5 ಚೆಂಡು. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 16 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ದಾಂಡ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಡ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ. ತಂಡದ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರರು ಜಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡು 15 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ಕಾಣುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ದಾಂಡಿಗೆ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡು. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 15 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ನೆಟ್ಟ ನೇರ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು.
ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಡವಿಕೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಕೂಡ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ನೆಲ್ಸನ್ ವಾಪಸಾತಿಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರ ಸರಿತಾ ಇದೆ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಈ ಬಾರಿ. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 15 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯತ್ತ ತೇರ್ಗಡೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ತಂಡವಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಈ ಬಾರಿ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಣದೊಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಖರ ಫಲಿತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಮಿಕ್ ಈ ಬಾರಿ ಅವರ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 15 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಿಖರ ಫಲಿತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡ. ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನ ಸೋಲಿಸುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಸಮರಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಗ್ ಬಾಯ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸಂದೀಪ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. तो मैं संतोष निवेदन करता हूं फाइनल मैच के टॉस हो जाए। यहां पर हमारे ऑफिशियल्स तैयार हैं टॉस के लिए। निवेदन करता हूं बिग बॉयज के कप्तान से कृपया कमेंटेटर्स बॉक्स के सामने आए। ಅಜಯ್ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೇನಿಲ್ಲ ನೈಟು Big boys won the toss. तो इस फाइनल मैच के टॉस को बिग बॉयज के कप्तान जीत चुके हैं। चलिए देखते हैं कि कौन से निर्धार वो अपनाते हैं इस फाइनल मैच में। जूस प्रीमियर लीग के आखिरी मौके पर हम आकर खड़े हैं और तो बिग बॉयज के कप्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किए हैं और दर्शक हम काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे इस क्षण का। जूस प्रीमियर लीग 2025 के इस फाइनल मैच के और इस फाइनल मैच में आपस में भिड़ रहे हैं जूस सुपर किंग्स और जूस बिग बॉयज के दो टीमें और इस मैच के टॉस जीतकर बिग बॉयज के कप्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किए हैं।
तो क्षेत्र रक्षण की पारी मैदान पर उतर चुके हैं। इस फाइनल मैच की दो ऑफिशियल अंपायर से मिस्टर संतोष और मिस्टर धीरज अपना अदाकारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। बिग बॉयज के कप्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किए हैं और इंतजार है हम दर्शकों को कि जल्द से जल्द इस मैच का शुरुआत हो जाए। और तो दो ऑफिशियल अंपायर्स अपने कदमों को मैदान के और बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और फील्डिंग साइड्स सुपर किंग्स के अब अपने क्षेत्र रक्षकों को सजावट कर रहे हैं और आरंभिक सलामी बल्लेबाजों का इंतजार है हमें। तो आरंभिक सलामी बल्लेबाजों के रूप में मैदान पर उतर चुके हैं बल्लेबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज अंकित और दाएं हाथ के बल्लेबाज रफी। दो सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतर चुके हैं। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा हम देख चुके हैं इन दोनों बल्लेबाजों से। तो स्ट्राइकर एंड पर है बल्लेबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज अंकित और नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े हैं बल्लेबाज दाएं हाथ के बल्लेबाज रफी। चलिए देखते हैं इन दो बल्लेबाज मिलकर इस फाइनल मैच में पहली इनिंग्स में कितने रन बटोर लेते हैं अपनी टीम के लिए। और गेंदबाजी पर तुले हैं, पहला ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं नेशनल हाईवे एंड से गेंदबाज साई दर्शन पहला ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे नेशनल हाईवे एंड से। इनका सामना करने वाले हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज अंकित और दोनों बल्लेबाजों के लिए कप्तानों द्वारा थोड़ी बहुत फील्डिंग की सजावट हो रहे हैं और पहला ओवर इस पावर प्ले का शुरू होने वाली है। पहला गेंद लेकर साई दर्शन अपना पहला गेंद लेकर गेंदबाजी करेंगे बल्लेबाज अंकित के लिए। अच्छी गेंद हल्के से मोड़ दिया, लगभग कवर और पॉइंट के बीचों बीच एक रन प्राप्त कर चुके हैं बल्लेबाज। धीमी गति की शुरुआत वहां पर, हालांकि आमतौर पर बल्लेबाज पहली गेंद पर फुल स्विंग देना चाहते हैं। इस बार काफ़ी सम्मानपूर्वक इसे हल्के से मोड़ दिया, लगभग पॉइंट और कवर के बीचों बीच एक रन के लिए। इस जरिए बल्लेबाज रफ़ी स्ट्राइकर एंड पर पहुंच चुके हैं। चलिए देखते हैं रफ़ी क्या कुछ कर पाते हैं साई दर्शन की बेहतरीन जो अब तक गेंदबाजी रही है। ऐसे बीच साई दर्शन अपना दूसरा गेंद लेकर अंपायर को पार करते हुए, ऐसे बीच अच्छी गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ी बहुत नीची रही गेंद, इसको सम्मानपूर्वक ड्राइव किया है
हालांकि यहां पर रन नहीं बनी है, शॉर्ट मीडियम पर फील्डर मौजूद थे, कोई मौका नहीं मिला दोनों बल्लेबाजों को रन चुराने की। और अपना तीसरा गेंद पर तुले हैं गेंदबाज शाही, ऐसे बीच बल्लेबाज रफी स्ट्राइक एंड पर। इस बार उछाल दी है डीप मिड विकेट सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए और बेहतरीन स्ट्रोक। जैसे ही गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ पर पड़ी और पूरी तरह से तैयार थे वहां पर बल्लेबाज रफी, जिन्होंने अपने कदमों को थोड़ी बहुत झुकाते हुए उछाल कर मारा है लगभग डीप मिड विकेट के सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। इस 6 रनों के बदौलत स्कोर बोर्ड पर स्कोर पहुंच चुके हैं 7 रन, 7 ऑन द बोर्ड। और साई दर्शन अपना चौथा गेंद लेकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार रफी के लिए। और इस बार भी शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी, लेकिन धीमी गति की गेंद परिवर्तन के तौर पर, जिसकी वजह से कुछ ज्यादा पढ़ नहीं पाए वहां पर बल्लेबाज रफी। धीमी गति की गेंद होने के बावजूद गेंद हल्के से उछाल लेते हुए इनके कंधों तक जरूर आई थी। बल्लेबाज ने पुल करने की कोशिश की थी, टाइमिंग मिस कर बैठे, जिसकी वजह से रन कोई नहीं बनी और रन 7 रन पर टिकी हुई है। इसी बीच अपना 5वां गेंद लेकर तैयार गेंदबाज इस बार ट्राई क्या है, इस बार डीप मिड ऑन की दिशा पर 6 रनों के लिए। यह दूसरा छक्का रफी के बल्ले से। पूरे इरादे के साथ मैदान पर उतर चुके रफी इस फाइनल मैच में धुआंधार बल्लेबाजी करने की, और अब तक काफी कुछ रंग लाई हैं। साई दर्शन जैसे बेहतरीन गेंदबाजी पर 2 छक्का जड़ चुके अब तक। इसी बीच आखिरी गेंद है, इस बार फुल स्विंग देने की कोशिश, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी बहुत नीची रही गेंद। ओवर की समाप्त हो चुके हैं, पावर प्ले की समाप्त होते ही स्कोर बोर्ड पर स्कोर पहुंच चुके हैं 13 रन, 13 ऑन द बोर्ड। और एक बेहतरीन शुरुआत वहां पर बिग बॉयज के बल्लेबाजों से, खास करके रफी जो थे, जिन्होंने डीप मिड ऑन और डीप मिड विकेट के ऊपर से 2 छक्का जड़ दिए थे साई दर्शन की गेंदबाजी पर। तो चलिए, थोड़ी बहुत दबाव में आ पड़ी हैं सुपर किंग्स की क्षेत्र रक्षण की पारी, और कप्तान को कुछ सोचना होगा, रणनीति बदलना होगा। और दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए कॉलेज एंड से भविष्य आए हैं, गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और काफी अच्छे गेंदबाज अब तक साबित हो चुके हैं भविष्य। इसी बीच भविष्य तैयार अपना पहला गेंद लेकर गेंदबाजी करने के लिए स्ट्राइकर एंड पर। बाएं हाथ के बल्लेबाज अंकित तैयार। इसी बीच पहला गेंद लेकर तैयार गेंदबाज, और इस बार उछाल दी है डीप मिड विकेट की दिशा पर सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। इस बार बल्लेबाज अंकित थे, बाएं हाथ का बल्लेबाज, कोई कसर नहीं छोड़ा। भविष्य की गेंद पर और एक सिक्सर जड़ दी है। तो ये इनिंग्स के तीसरा छक्का जड़ते ही स्कोर बोर्ड पर स्कोर जमा हो चुके हैं 19 रन, 19 ऑन द बोर्ड। तो एक धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है बिग बॉयज के बल्लेबाजों से। भविष्य अपना दूसरा गेंद लेकर तैयार। इस बार फिर से एक बार निकाल दी है लगभग डीप मिड ऑन के सीमा रेखा के ऊपर से, और एक छक्का। और इरादा तो पक्का है बल्लेबाजों के धुएंधार बल्लेबाजी करने की। ये चौथा छक्का जड़ते ही स्कोर बोर्ड पर 25 रन जमा हो चुके हैं, 25 ऑन द बोर्ड।
काफी देर से खामोश खड़े थे कुछ मैचों में। बल्लेबाज अंकित इनको बांध कर रखने में गेंदबाज सफल हुए जरूर। इस फाइनल मैच में बाजुओं को खोल के खेल रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद टिप्पा करने के बाद थोड़ी बहुत अंदर की तरह स्विंग हुई, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों पर। अच्छी कमबैक कह सकते हैं भविष्य से। हालांकि चक्का तो जड़ दी है, लेकिन वापसाती करने की कोशिश करनी चाहिए गेंदबाजों को मैच पे यदि बनी रहने हैं तो। इसे बीच अगला गेंद इस बार ट्राई किया है, गेंद गई है लगभग लॉन्ग ऑन की दिशा पर। जब तक फील्डर फील्ड करे, थ्रो करे, बल्लेबाज दौड़कर 1 रन पूरा कर चुके हैं। इस 1 रन की मदद से 26 रन स्कोर बोर्ड पर जमा हो चुके हैं। 26 ऑन द बोर्ड। और भविष्य अपना अगला गेंद लेकर तैयार। इस बार रफी स्ट्राइकर एंड पर पहुंच चुके हैं। और अपना 5वां गेंद लेकर भविष्य तैयार। स्ट्राइकर एंड पर है रफी, जो कि भविष्य की 5वां गेंद का इंतजार करते हुए। भविष्य इस बार अच्छी गेंद, काफी अच्छे फुटवर्क के जरिए इसे खेल दिया है लगभग वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा पर। 1 ही रन से संतुष्ट करना पड़ा बल्लेबाजों को। इस 1 रन की मदद से 27 रन स्कोर बोर्ड पर जमा हो चुके हैं। 27 ऑन द बोर्ड। और अंकित स्ट्राइकर एंड पर। ऐसे बीच अच्छी गेंद, परिवर्तन के तौर पर धीमी गति की गेंद। ओवर की समाप्त हो चुके हैं। 2 ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर बोर्ड पर 27 रन जमा हो चुके हैं। 27 ऑन द बोर्ड। अभी भी 3 ओवर का खेल बाकी बचे हैं। चलिए कितने रन बटोरने में कामयाब होते हैं 2 सलामी बल्लेबाज रफी और अंकित, जिन्होंने धुएंधार बल्लेबाजी से शुरुआत की है इस फाइनल मैच के पहली इनिंग्स को, और कुछ हद तक बेहतरीन अंजाम दिए हैं। और साई दर्शन वापस अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दूसरे ओवर के पहला गेंद लेकर अपनी टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे। और स्ट्राइक रन पर रफी खड़े हैं। ऐसे बीच धीमी गति की गेंद, परिवर्तन के तौर पर खास कुछ कर नहीं पाए, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाए क्षेत्र रक्षक। इस 1 रन की मदद से 28 रन स्कोर बोर्ड पर जमा हो चुके हैं। 28 ऑन द बोर्ड। और इस 1 रन लेते ही नॉन स्ट्राइक करंट से बाएं हाथ का बल्लेबाज अंकित स्ट्राइक करंट की ओर आ चुके हैं। और साई दर्शन अपना दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। और इसे बीच अच्छी गेंद, ठिप्पा खाने के बाद थोड़ी बहुत बाहर की तरफ स्विंग होते हुए ये गेंद विकेट कीपर के दस्तानों पर पहुंच चुके हैं। मेरे ख्याल से इस बार धीमी गति की गेंद का प्रयोग किया है वहां पर गेंदबाज साई दर्शन ने, जिसकी वजह से खास कुछ कर नहीं पाए वहां पर बाएं हाथ का बल्लेबाज। इसी बीच अगला गेंद इस बार ड्राइव किया है लगभग एक डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा पर फील्ड होते हुए 1 ही रन से संतुष्ट करना पड़ा बल्लेबाजों को। इस 1 रन की मदद से कुल मिलाकर 29 रन स्कोर बोर्ड पर जमा हो चुके हैं। 29 ऑन द बोर्ड। और स्ट्राइकर एंड पर वापस रफी आ चुके हैं। और गेंदबाज साई दर्शन अपना अगला गेंद लेकर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए रफी के लिए। इस बार ड्राइव किया है, ठीक तरह से बल्ले पर नहीं आई है गेंद। डीप मिड ऑन की दिशा पर फील्ड होते ही बल्लेबाज सिर्फ 1 ही रन से संतुष्ट कर पाए हैं। और इस 1 रन की मदद से 30 रन स्कोर बोर्ड पर जमा हो चुके। 30 ऑन द बोर्ड। और इसे बीच अगला गेंद इस बार पुल करना चाहा, शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी, लेकिन ठीक तरह से बल्ले पर नहीं आई थी गेंद। और साई दर्शन की ओर में आखिरी गेंद बची हुई है। 30 रन स्कोर बोर्ड पर जमा हो चुके हैं।
और थोड़ी बहुत अंकुश लगाने में कामयाब हो चुके हैं। इस वक्त गेंदबाज साई दर्शन धुएंधार बल्लेबाजी पर। इस बार उछाल दी है डीप मिड ऑन के फील्डर के सर के ऊपर से, गेंद बॉलना के बाहर जा सकते हैं, लेकिन जीतोड़ कोशिश के बाद वहां पर रोक दी वहां पर क्षेत्र रक्षक ने, जिसकी वजह से बल्लेबाज सिर्फ 2 रन प्राप्त कर चुके हैं। इस तरह 3 ओवर समाप्त होने के बाद स्कोरबोर्ड पर 32 रन बन चुके हैं, यानी 32 ऑन द बोर्ड। और बेहतरीन बल्लेबाज अभी भी जारी हैं, हालांकि इस ओवर में उतनी ज्यादा रन नहीं बनी हैं पिछली ओवर पर कंपेयर किया जाए तो। और चौथा ओवर लेकर सुपर किंग्स की तरफ से कप्तान ने स्वयं को लाए हैं गेंदबाजी करने के लिए। कॉलेज एंड से गेंदबाजी करेंगे बल्लेबाज रफी इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर, और रफी के लिए थोड़ी बहुत फील्डिंग की सजावट करते हुए गेंदबाज स्वयं तैयार गेंदबाजी करने के लिए। चलिए देखते हैं रफी इस ओवर में क्या कुछ कर पाते हैं। ये पहला गेंद इस बार ड्राई किया है यहां पर लगभग वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा पर, गेंद बाउंड्री लाइन के पास से है, कैच आउट हो चुके हैं। इस वक्त बल्लेबाज ने उछाल कर जरूर मारा, लेकिन दिशा बिल्कुल गलत थी, जिसकी वजह से नतीजा भुगतना पड़ा वहां पर बल्लेबाज रफी को। पहला विकेट पतन होते ही नए बल्लेबाज रोशन, इस बार अच्छी गेंद, काफी रफ्तार वाली गेंद, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी बहुत नीची रही, सीधी विकेट कीपर के दस्तानों पर गेंद गई है। स्वयं अपना तीसरा गेंद लेकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार, अपनी पहली गेंद पर सफलता पा चुके हैं, अपना तीसरा गेंद लेकर तैयार। इस बार अच्छी गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा ले, लेकिन वहां पर क्षेत्र रक्षक मौजूद, रन लेने की कोई मौका नहीं वहां पर। पूरी तरह से बल्लेबाजों पर अंकुश लगाने में कामयाब हो चुके हैं। अब तक गेंदबाज स्वयं एक विकेट भी चटका चुके हैं, अपना अगला गेंद लेकर तैयार। इस बार ट्राई किया है, हवा पर उड़ी है गेंद, फॉलो थ्रू पर स्वयं ने कैच ली है और एक विकेट अपने खाते में दर्ज कर ली है। तो इनका स्थान बनने के लिए नए बल्लेबाज नितिन मैदान पर उतर चुके हैं। नितिन भी काफी क्षमता भरे बल्लेबाज हैं। चलिए देखते हैं जो सिलसिला उन्होंने शुरुआत की थी, बल्लेबाजों ने धुएंधारी बल्लेबाज की, थोड़ी बहुत ढल चुकी है इनकी कोशिश। जहां तक हम बात करें साई दर्शन की दूसरी ओवर और स्वयं की ये ओवर कुछ हद तक रंग लाई हैं सुपर किंग्स के लिए। ऐसे बीच ड्राई किया है, एक्स्ट्रा कवर की दिशा पर गेंद जा चुके हैं, क्षेत्र रक्षक मौजूद, जब तक फील्डर फील्ड करे बल्लेबाज दूसरा रन पूरा करने के लिए कोशिश में तैयार, और ये दूसरा रन भी पूरा कर चुके हैं। इस 2 रन की बदौलत स्कोर बोर्ड पर स्कोर पहुंच चुके हैं 34 रन स्कोर बोर्ड पर जमा हो चुके, 34 ऑन द बोर्ड। ऐसे बीच ड्राई किया है, हवा पर जरूर रही लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाए। स्वयं के एक बेहतरीन ओवर समाप्त होते ही 4 ओवर के समाप्त होने के बाद 35 रन स्कोरबोर्ड पर जमा हो चुके हैं। इनिंग्स की आखिरी ओवर बची हैं, लगभग मेरे ख्याल से यदि 45 रन तक पहुंच जाए स्कोरबोर्ड तो एक सम्मानपूर्वक स्कोर कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बलाढ्य बल्लेबाजी की पारी मौजूद है सुपर किंग्स के तरफ से। और 35 रन यानी 35 रन स्कोरबोर्ड पर जमा हो चुके हैं।
आखिरी ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए सुपर किंग्स की तरफ से गेंदबाज तो आखिरी ओवर लेकर कार्तिक सुवर्णा गेंदबाजी पर आ चुके हैं। चलिए देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं। लगभग बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन देते हुए नजर आए स्वयं अपने टीम की चौथे ओवर पर, इस बार पांचवा ओवर लेकर यानी आखिरी ओवर लेकर कार्तिक इस बार ड्राई किया है। वहां पर हवा पर रही गेंद, क्षेत्ररक्षक मौजूद और कोशिश में नाकामयाब, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो इस 4 रन के बदौलत स्कोरबोर्ड पर स्कोर आगे बढ़ते हुए 39 रन स्कोरबोर्ड पर जमा हो चुके हैं और कार्तिक के पहली गेंद पर पिटाई हो चुकी है। अपना दूसरा गेंद लेकर तैयार। इस बार नितिन ने ड्राई किया है, लगभग लॉन्ग ऑन की दिशा पर फील्ड होते ही 1 रन बन चुके हैं। इस 1 रन की मदद से 40 रन स्कोरबोर्ड पर जमा हो चुके हैं और 4 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है इस इनिंग्स में। और कार्तिक अपना तीसरा गेंद लेकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार और बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पर खड़े हैं। कार्तिक अपना अगला गेंद लेकर इस बार ड्राई करना चाहते थे, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी बहुत नीचे रहे और बल्ले का बाहरी किनारा लगा होगा जी। और जी हाँ, बल्ले का बाहरी किनारा लिया था। आखिरी मौके पर इन्होंने स्टीयर करने की कोशिश की थी लेकिन सीधे विकेट कीपर के दस्तानों पर गई थी। तो अंकित की एक बेहतरीन पारी पर पर्दा गिर चुके हैं। आशाद नए बल्लेबाज मैदान पर उतर चुके हैं, स्ट्राइकर एंड पर है। ऐसे बीच लंबे स्विंग देने की कोशिश की वहां पर आशाद ने, लेकिन कोई मौका नहीं वहां पर। काफी नपी तुली गेंदबाजी का प्रदर्शन देते हुए कार्तिक एक बाउंड्री गिरने के बाद अपने आप को संभाले और दिशा और काफी आत्मविश्वास के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। और कार्तिक अपना अगला गेंद लेकर तैयार आशाद के लिए। इस बार उछाल दी है गेंद, हवा पर लहराते हुए डीप मिड ऑन के सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए और एक छक्का जड़ चुके। इस बार बल्लेबाज आशाद थे। (46 on the board) और ऐसे बीच कार्तिक आशाद के लिए इस बार ड्राई किया है, गेंद गई है। 1 रन और दूसरा रन के लिए दौड़ना चाहते थे और 2 रन पूर्ण कर चुके हैं। तीसरा रन के लिए शायद दौड़ना चाहते हैं और ये तीसरा रन भी पूरा कर चुके हैं। और इस बार चार रन दौड़ चुके हैं 20 बीचों 20। इस 4 रन के बदौलत स्कोरबोर्ड पर 50 रन पूरा कर चुका है और अर्धशतक आखिरी गेंद पर 4 दौड़ कर पूर्ण कर चुके हैं। जीतने के लिए 51 रनों की विक्ट्री रखी है
मैच का आगे का आंखों देखा हाल अब तक लाएंगे हमारे अंग्रेजी कमेंटेटर मिस्टर संदीप। These big boys are getting better, bigger and bigger and royally bigger. After eliminator match, they are showing their true colors here. This has been extraordinary performance from these big boys here. Facing defending champions, Super Kings. They added 50, I think. 51 will be the target. This is a big target. Let's see who will be our champion of Zeus Premier League 2025. This is a game of the champions. Let's see. Wishing both the teams all the best. Here comes the two openers. The team in form, Rajat and Karthik are the two openers. Remember, they lost just a single. So, our three officials have done a brilliant job till now. Suresh, Santosh, Dheeraj, they've been excellent in the ground, and I would like to thank our Namma News 24/7's all the cameramans, computer operators. They have been excellent till now, especially cameramans Jitesh Mangaluru is our computer operator, Madhu K cameraman, Ganesh Kasargodu cameraman, Shushant our online scorer with Pratik, Nijesh another cameraman, strike is with Rajat, Roshani, Sudeep is the bowler, Sudhi is the bowler, Karthik is a non-striker, Rajat is a striker, and as a man of scorer, I am assisted here by Geetesh. Goes big, goes high, and there is no fielder covering it. First ball 3 have been added. What a brilliant start. They started brilliantly here. Big boys have to think here because just a single power play over. They kept one on long on, another one is in the deep mid wicket. They have to use their mind. Let's see. 4 runs on the board. 51 is the target. 47 more from 29 deliveries. This is going to be very exciting final here. Sudhi coming second time here. Beautiful and an exceptional shot. There is nobody covering it. It's going long, I think. 6 and is a goal from the umpire. 10 runs from 2 deliveries. Rajat is a man. What a brilliant start this has been. 2 over-pitch deliveries. One on the offside region. Another one is on the leg side region. Have been hammered on both sides of the wicket. What a brilliant start from Rajat. Let's see what happens now. Big boys feeling the pinch. 10 from 2 deliveries.
4 power play deliveries remains. Rajat is a very clever cricketer. Let's see what he will come up with now. Another over pitch delivery. Thankfully, there is a fielder. Exceptional stop, but can't stop the batsman from crossing for a single. One more single. So with their single score sheet jumps up to 11. Get ready for the party, both the teams. We haven't seen a miracle till now in this tournament. Will it be the final which shows us a miracle? Waiting for a one. Let's see. Beautiful, exceptional one. Loud appeal, loud appeal. Umpires are on mode. Even the keeper was not appealing for it. Sudhi again. 4 deliveries completed. 11 on the board. Sudhi coming 5th time in this over. Short delivery and could not do much there, and misfield. They will cross for a single. They will be looking for a second run. Running hard, complete the second run quite efficiently and quite easily there. What a wonderful power play over from the hands of Sudhi, especially for the batting team. Rajat and Karthik doing most of it. One more delivery remains. Let's see what they will come up with there. Beautiful, exceptional, true to the point. They will cross for a easy single. They won't take a risk. They will be happy with the single. With their single score jumps up to 14 on the 14 ಒಂದೋವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ 24 ಎಸೆಗಳ ಮುಂದೆ 27 ರನ್ 37 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. So this is going to be a very crucial over of this innings. Rajat and Karthik given a brilliant start for Super Kings. I request fielding team get on with the game. Exceptionally, there is a fielder. Settles down comfortably and takes a brilliant catch. Karthik will be coming back. I was talking about this over. This is a very crucial over of this innings. Wicket tumbles. ಬಿಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ವಿನಂತಿ, ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೆಗೆತ ಕುಣಿತ ಮಾಡಬೇಡಿ ವಿನಂತಿ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್. Sai Darshan is a new batsman. 2 consecutive dot deliveries. More importantly, wicket of Karthik have been gathered. They need the wicket of Rajat. He is the man who is in form till now in all the qualifiers and league matches. The one star who is shining throughout the league and qualifiers. And there was a easy chance. Sai Darshan missed the chance there. Easy full toss on the legs. Sai Darshan had plenty of opportunity to make full use of it. Unfortunately, it took the legs and they will cross for a single there. Runs have been driving up dramatically in this over. More importantly, Rajat is on strike. Let's see what he can come up with. Charan, can he take this important wicket? In the air, there is a fielder. He takes this wicket. Rajat is also coming back. Charan is the man. Rajat is also coming back. Roshan makes his way into the middle with a huge pressure on his head.
captain of the side, Roshan. Karthik's wonderful adventure in this league comes to an end with a brilliant catch over in the point region. And Charan is creating some magical turnaround for big boys. Score sheet scroll down to 15, I think. 15 ರನ್ಗಳು 36 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಳಿದ 20 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. Roshan is on strike. Charan is a bat bowler who is creating magic. Let's see. Far away from leg stump region. Easy decision for umpires. Easy decision for the umpires. We have to feel very sad for our umpires. Nobody was satisfied because they were very strict and disciplined. Beautiful straight drive. There is a fielder on deep cover. They will be happy with a single. With that single, runs are scrolling down in this over. Just 3 runs came from this over. Sai Darshan is on strike. It's been exceptional over till now. Another beautiful delivery again. Over completes. What a wonderful over this has been. Charan completes his over. After completion of 2 overs, score is 17 on the board. 17 34 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಳಿದ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. $34 more from 18. 11.5 runs per over, I think. 11.3 runs per over is a run rate required. Things are getting very, very tougher. Nitin makes his way into the bowling mark. Comes right arm over the wicket to the batsman Roshan, the captain of the side. Will he take the responsibility? I was talking about miracles. Charan created one. Let's see. Can Roshan create another one? Yeah. Goes through to the mid-wicket region. There is a fielder set exactly for that shot. Exceptional bowling. Nitin is bowling according to the field here. Just a single have been added. And all the supporters of big boys are shouting from anywhere. Everywhere rather. Again the shout, and it's so wonderful. There is a fielder. Valid effort but could not keep the ball in the ground. Sixer is a goal from the umpire. Easy full toss. That to the man with the strongest muscles. Sai Darshan. He had an easy choice. Go big there and he connected exactly that. 6 runs. Things are taking a turn around again. First over, it was a game of Super Kings. Then Big Boys came back broadly there. After that, Super Kings again taking control here. Let's see. Comes on, big goes big. There is a fielder. He pushes down. It's a 6 more. What exceptional bowling and what a poor bowling actually. Sixer. Sixer is a goal for the umpire. So the ball hit the eyes of that fielder, I think. Let's see. Everything is all right. So we are back to business here. 2 in 2 in this over. Score sheet moves on to 30 on the board. 21 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಳಿದ 15 ಎಸೆಗಳ ಮುಂದೆ. What a turnaround. 3 phases in this match and 3 turnarounds already. Again Super Kings taking control thanks to Sai Darshan's brilliant hitting here. First it was Rajat and Sai Darshan is continuing the good work.
Again took the edge. There was a chance, but fell well away from the reach of the ball. There, dot delivery. Can Nitin come back here? They need two crucial dot deliveries. If it comes with the wicket, it will be very beneficial. 21 more 14 deliveries remains. Sai Darshan is the man. Two consecutive sixes in already in this over. Another short delivery in there. There is a fielder. Settles down. Easy catch. Takes it. Sai Darshan now goes back. Sai Darshan goes back. So, Bhavish makes his way into the middle. Bhavish is a man, makes his way into the middle. Score sheet is healthy as of now for Super Kings, thanks to Rajat and Sai Darshan. Bhavish is an exchange batsman. Last two deliveries remains. Last ball to go. More importantly, I was talking about dot deliveries with the wicket. One he produced, let's see, can he produce another one? If it comes with the wicket, it's a double bonus. Right arm over again. Right arm around rather. Nitin to Bhavish. Wonderful, exceptional comeback. 3 consecutive dot deliveries. Over completed after completion of 3 overs. Score sheet is 30 on the board. 21 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಉಳಿದ 12 ಎಸೆದು ಬಂದೆ. ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ. 3 overs, 3 phases, and this is the 4th over. Will be bowled by, let's see who will be the next change bowler. So, intelligent cricket. Charan is given the responsibility of completing his quota of 2 overs. 21 from 12. We had 3 phases. Let's see. Can we have another one? 2 times Super Kings have the upper hand. Only once time Charan had it for big boys. Brilliant dot delivery on the board. Dot delivery on the board. 5 more deliveries to be bowled. Far away from leg stump region is a crime, is a call from the umpire. If you ball it outside the reach of the batsman, it will be termed as illegality. One more single gifted away there by Charan. Another beautiful delivery, exceptional bowling. Unfortunately, there is no LBW. How unfair for the bowlers here. One more single, thanks to that leg bias. Score sheet scrolling down to 32 on the board, I think. 32 on the board. Charan. Beautiful, exceptional. He was scrolling out of the reach, but unfortunately it is way out of reach of the batsman, says our umpires. Thankful for us and for umpires. There is nobody shouting at umpires in this match till now. Beautiful again, exceptional bowling. Louder B is given out as a stump out. He is going back. Tragedy. Absence of mind from the batsman there, and he is coming, paying the dividend for that. He is coming back. Fayaz making his way into the middle. Things are getting tougher here. Charan, what an exceptional spell of bowling. Three balls completed.
Score sheet is still stuck at 32 on the board. 33 on the board, sorry, my mistake. 33 on the board. 9 balls, 18. Required here. Fayaz takes the guard. One thing for sure, he will be going hammer and tongue for sure here. He won't be looking for a basic singles here, but unfortunately, because of the outer edge of the bat, they has to cross for a single. 2 more deliveries to go. What exceptional bowling exhibition from Charan. Till now, he is the bowler who is creating magic. Charan again. Reverse scoop attempted. Again the same mistake from Super Kings. Dot delivery on the score sheet. Roshan struggling in the middle. Still we haven't seen a big shot from the bat of Roshan. Another beautiful shot. There is a fielder on point. Collects it just for a single. Over completes. Exceptional over comes to an end. What a spell of bowling from Charan there. One man who is putting break on the run rate here. After the completion of 4 overs, score sheet reads 35 on the board. 6 ಮುಂದೆ 16 ರನ್ಗಳು. Who will be that golden boy who will be bowling the last over? Pramit is the bowler, says the captain of Big Boys. 16 from 6. Pramit is the bowler. The off spinner taking guard from the umpire. Roshan is on strike. Remember, we rarely see a spinner bowling on tennis ball. This is a very special talent. As a spinner, he is taking a risk of bowling the spin in the last over. If you ball that shot, it will be punishable. Unfortunately, there is 2 fielders. Exceptional catch! What a brilliant catch that is! Who would have thought? He will be catching that. What a brilliant catch! And the batsman Roshan's struggle comes to an end. He is coming back thanks to that brilliant exhibition of fielding. So Big Boys are telling he is a Surya Kumar of Big Boys. Let's see. Roshan is back. Next change batsman is Praveen, makes his way into the middle. 5 over 16 now. Harbhajan Singh of Big Boys already got a single wicket as suggested by Super Kings 12th man. Let's see Pramit. Second delivery of this final over. Short delivery again. Lucky escape. Slowness of the ball creating magic there. Slower the ball, slower you ball, the higher the balls you get. That is the logic created there by Pramit. Third delivery go. Third delivery on the way. And high, there is no fielder. It will be a crucial boundary. Again the same logic applied here by the batsman. Slower the ball goes, higher the bounce it gets. That's why it went out of the reach of the fielders there. 39 on the board, 12 more I think from remaining 3 deliveries. What a match we are witnessing here. Let's see, can we find a 6 here? Goes for it, there is a fielder. They will settle down for a single. They are coming back for second and lack of urgency I would say from Big Boys. Every run is crucial. They gave away that extra run there. Let's see, 10 from 2. 10 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 1 golden delivery required from the hands of Pramit for Big Boys. At last it is a one. Ball keeper comes around. They are not dropping anything now. They have the cup in their hand.
They have the cup in their hand until and unless they make any mistakes here. One more delivery to be hold. One more delivery remaining. They are dropping nothing. Even the cup, yeah, they are having in their hand. Remember, they were struggling in the group stages. After the eliminator, they came to their own colors and they are coming there with a golden talents here. Pramit again. And congratulations! Let's wait for the umpires. No signals and congratulations. Big boys are the champions of Zeros Premier League 2025. What exceptional performance. It's over to our scorers to calculate all the winners here. Thank you. I request Danu, please make your way into the commentary box. Danu of the organizing committee. Dhanraj, please make your way into the commentary box. Our scorer needs to talk to you. Dhanraj, ದಯವಿಟ್ಟು commentary box ನ ಹತ್ತಿರ ಬನ್ನಿ.
I request all the cricket lovers and all the players, please gather around our main stage. It's time for prize distribution and celebration. I request all of you, please come forward through to the main stage. It's been a wonderful day, not day, 2 days rather. Let's get on with the prize distribution celebration here. I request all the players, please come in front of our main stage. ಬಲ್ಬಲೆ ಬಲ್ಬ್ I request Kabir Sheikh sir, please come and honor our league winners and champions. I request you to honor our main stage and do the honors of awarding all the winners and champions. I request all the teams, please come forward and be crowded in front of the main stage. Please, this is a request. It's almost 3 p.m. 3 a.m. rather. Kabir Sheikh sir of KA Associates, please come and do the honors of awarding all the match winners and champions. Kabir Sheikh is here. I request first we'll go through the women's champions. I request organizers, please come here. I request in the women's best batsmen have been awarded to Ramita. I request if Ramita is here, please come and collect your best batsman's award from our beloved guest for your wonderful batting exhibition. Go and collect your best batsman trophy from our beloved guest for your wonderful batting exhibition. As a best bowler, we have Jane, who has been exceptional with his bowling exhibition. If she is not here, any of our captain or owner of the team, please come and collect the man of the match best bowlers award for Jane.
it's time for a man of the series of the grand series of women's cricket. Man of the series award goes to Savita of Royal Army. I request any of our team member, please collect our wonderful trophy for our exceptional all-round performance in the final and semi-final rather. So it's time for to award men's qualifier ones man of the match. It goes to Charan for his wonderful batting bowling exhibition. Qualifier 2's man of the match to Charan. Charan of Big Boys. The Big Boy, please go and collect your man of the match trophy for your wonderful bowling exhibition in the qualifier 2. He taken 3 wickets in that. Meanwhile, as a best batsman, we have awarded Rajat for his exceptional run. Rajat of Super Kings, please come and collect your man of the best batsman's trophy from our beloved guest here. Rajat of Super Kings, go and collect your best batsman's trophy from our Super Kings beloved guest. It's time for best bowler. Charan again. Charan is a man who is getting the best bowlers award for his wonderful bowling exhibition. This time for Africa. Stay there. You will be awarded with the man of the match too for the finale. This time for Africa. This time for Africa. This time for. This time for. This time for. This time. Go anywhere. There is another trophy for your wonderful man of the match performance in the finale too. Man of the match trophy for your wonderful man of the match performance in the finale. Charan is the man. He is bagging all the awards here. So it's time for man of the series of Men's Super League. It's Sai Darshan of Super Kings. For his brilliant all-round performance, Sai Darshan is awarded as a man of the series. This time for Africa. This time for Africa. I request Zeus Phoenix, any player or team member, please collect your token of gratitude from our beloved guests for your participation in this tournament. Any player of Zeus Phoenix, please collect your token of gratitude from our beloved guests here. Please go and award Phoenix. Sorry, my mistake. So it's time for the men's runners of finale. Super Kings, please go and collect your award and a cash prize for your participation and exceptional performance in the grand finale too. Sai Darshan and team Super Kings. So, organizer requested first to award our women's team. Royal Army, please go and collect your Champions Trophy from our beloved guest. What a dominating performance from Royal Army there. Out of 3-match series, they won hands down 2-0 there.
It's time for men's championship trophies. I request Super Kings, please collect your runners trophy and a cash prize for your wonderful participation. Super Kings, the runners of this grand finale, please collect your wonderful trophy. The owner and the captains and all the players, please make your way to the main stage. Our honorary guest is waiting for you. Zio Super Kings, our runner-ups of this season's Premier League. I request all the players and the owner. Come to Dubai. Halamti Habib, 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 Halamti Habib. Thanks to Kabir Sheikh sir, because of him we are witnessing this enjoyable moment here. Remember that Kabir Sheikh sir is the one who is organized and sponsored all of this one. And it's time for the champions. Get ready, big boys. It's your time. Zio's Premier League 2025. The champions will be taking the main stage here. Congratulations, and please make your way to the main stage with your owner. Of course, please do the honors. Big boys, it's your time. You are the champions of Zio's Premier League 2025. Big boys, it's your time. Enjoy this moment. Champions of 2025. Zio's Big Boys. Big boys, please do the honors. Kabir Sheikh sir is waiting for you all. And thank you for the opportunity. And we are signing out. Thanks a lot. Enjoy the evening, not evening, morning rather. Thank you.
पानी की मछली हूँ राजा, घाट घाट दरिया में घूमी हूँ मैं, तेरी नजरों की लहरों से हार के आज डूबी हूँ मैं। हाय चांदनी वो जलवा है, चांदनी वो होगी बंटू तू, ये बंटू तू, वो होगी गुंडे दी, बंटूरा वाली की, तू है मेरी उठी दी, वो होगी गुंडे दी, हिलाते चलती, टुक 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 करती, मेकअप तो करती, अंग्रेजी पढ़ती, किट पिट तो करती, जिम्मे कोई नहीं विक्टोरिया, तू कहती बिग बैन थी, पूरा लंदन चमकता, वो कदो बैन थी, पूरा लंदन चमकता, कहती बिग बैन थी, पूरा Everybody knows it, Bravo, a champion, 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 champion. Everybody know Chris Cale is a champion, Beanie a champion, Bounty a champion, Marshall is a champion, Buddy is a champion, Poland is a champion, Lara is a champion, Gale is a champion. Don't forget Michael Jordan, Obama a champion, Mandela a champion, Serena a champion, Wendy a champion, Shelly a champion, 958 Bolt a champion. Champion, 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 champion. Everybody knows it, Bravo, a champion, 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 champion. Everybody knows Chris Cale is a champion. Champion, be a real champion. Champion, be a real champion. Champion, be a real champion. No guys if your name not called. Every league, every man some ball. We love soccer and dancehall. We love cricket and football. Come and dance in a my name and call. Champion, champion. Every journey and every icon. Champion, champion. Every busy and every patient. Champion, champion. Every journey and every icon. Champion, champion. Beanie a champion, Bounty a champion, Marshall is a champion, Buddy is a champion, Poland is a champion, Lara is a champion, Gale is a champion. Don't forget Michael Jordan, Obama a champion, Mandela a champion, Serena a champion, Wendy a champion, Shelly a champion, 958 Bolt a champion. Champion, 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 champion. Everybody knows it, Bravo, a champion, 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 champion. Everybody knows Chris Cale is a champion. Chris is a champion, champion. King. तू आके देख ले ओ मैंने रातें कितनी सारी तेरी यादों में गुजारी सोनिए सोनिए तू आके देख ले ओ मैंने रातें कितनी सारी तेरी यादों में गुजारी सोनिए सोनिए लोग कहते बेचारा जरा पूछो तो क्यों हारा जब प्यार मिला नहीं तो दिल का दिल पर नाम बना डाला ये जो बतावारा कैसे जीता चला जा रहा बेखौफ निगाह मेरी झांक के देखो तो ताज बना आना पर तेरे आगे कुछ भी नहीं सब खाना बराबर मैं खो जाऊंगा मिलके मुझसे बात करा कर पर तेरे आगे कुछ भी नहीं सब खाक बराबर मैं खो जाऊंगा मिलके मुझसे बात करा कर कि तू मेरी आंखों में है पूरी जचती और तेरे आगे मेरी चलती ये दुनिया वाले निकाले ना कमी मैं अपने ऊपर ले लूं तेरी सारी गलती